And today we'll be going through the Python libraries which we have missed out yesterday, and then we'll be doing an hands-on data science project using data analysis, right? And then we'll be also going through then we'll also be going through the neural networks using TensorFlow, then classification and regression with some cool zombie projects. So stay tuned, stay till the last. You There are exciting prices till the end and whatnot. Yeah. So without further ado, let's get started. Mas bhai, please start. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well, and I also hope you all find the previous session really interesting and informative. Let's now take our Python journey to our next level. We will now be giving you introduction to Python specifically for data analysis. In this module, we are going to cover two libraries, pandas and matplotlib, which are widely used while performing data analysis in Python. But why Python? We all know we don't need an answer. Python can be used everywhere very efficiently, isn't it? Guys, okay, no problem. So before heading into this module, I would like to show you a small case study that we are going to learn as a data analyst. Okay, so let's start our case study. As you can see, a smart person here is Mr. Alex. Mr. Alex is a business individual who have multiple streams of earning. He is a rich person, but even though he's not happy, he wants to earn more. So what he does is he got an idea to invest in IPL. As we all know, IPL is one of the largest cricket league in this world, which produces a lot of money. So he thought to invest his money in some IPL team. There are a lot of IPL teams, right? Chennai, Mumbai, Hyderabad, and more. But the question is, which team should he invest in? As investment is a critical issue or a plan, we cannot take decisions based on guts. We need decision based on the data we have. What he does is he hires a data analyst and he explains him the story that I want to invest money in IPL. Show me the best team that I should invest my money in and I should get benefits. So what a data analyst does is what we do, just assume that we are all data analysts. The entire panel here in this session is a data analyst. What we do is we study the entire data that we have of IPL from 2008 to 2023. What we do is in order to take good decision, we check each and everything like matches per season, most match winners, most toss winners, maximum, minimum, and average first, second inning scores of each team. After considering all these things, we conclude that a particular team is better, a set of teams, these three teams are better. So you can invest in any of these three teams to the business individual. Did you guys get it? A small case study. We are going to make a project as by the end of this session after completing this small module. Okay, let me check the chats if you have. Did you guys get it?
Should we proceed in our main module now? Okay. So, what is data analysis? Data analysis is the process of deriving meaningful insights from data in order to make better business decisions. As you can see, there are some business individuals and you can see some graphs and demographics. After considering these factors, they conclude a decision which will help their business grow. So in this module, we are using Python. So the first library that we are going to cover is pandas. These are not jungle ke pandas, these are Python pandas. So pandas is a widely used library which makes the task of data analysis really easy. It have a set of features, functions and classes that will help us to clean the data easily, to perform analysis easily. We have data frames, series and some input output functions where here we get data from our system, databases and all, and this data is stored in data frames. Data frames is just a small structure of table. We have columns and rows in it. The data is stored in the form of columns and rows. Series on other hand is set of numbers. Just assume we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A one-dimensional array is series. A two-dimensional array is a data frame. So we'll be looking at creating a data frame. There are three methods of creating a data frame: from dictionary, from a CSV file, from lists. We'll now see how to create a dictionary, how to create a data frame using dictionary. Let's move to our Colab first. Are you all following me? मास भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक बार व्हाट्सएप चेक करो आप, जस्ट वंस। Wait. Since the beginning or in the middle? नहीं नहीं, अब बीच में थोड़ा कट रही। Okay, एक मिनट okay. व्हाट्सएप चेक करो। Let me just check. Okay, is my voice clear now? Hello? Yes, you are clear. Yes. Yeah, great. So अपन क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे. जो फर्स्ट मेथड था डेटा फ्रेम बनाने का, that was using dictionary. So we'll create some dictionaries. Okay, so let us name it D1. And how to create a dictionary? Let's name our column as name. Let the name be A, B, C, D, E. Okay.
and age be 18, 19, 20, 21, 22. So we got our dictionary here. So let us import pandas module. Import pandas as PD. We are referring pandas as PD here. Data frame 1 equals to PD dot. This is the syntax of creating a data frame. PD dot data frame. And here we will pass our dictionary D1. Hello. As we can see, our dictionary is converted into name and age. A, B, C, D, we have got a column, 2 columns here and number of rows. So this was the first way of creating a data frame. Let us now look at on the second way. We'll do it later. We'll do it using lists now. हेलो मास भाई हेलो. Hello. हाँ मास भाई, आपकी आवाज से कुछ फिर से एकदम आवाज आ रही है भाई. मतलब थोड़ा नॉइस आ रही है. एंड जरा डिक्शनरी का वो दियो ना. क्या बोलते हैं, डिक्शनरी का आइडिया दियो. कल नहीं पढ़ाए थे डिक्शनरीज. डिक्शनरीज नहीं कवर करेगा. ओके. नहीं, टपल्स तक करे थे. डिक्शनरी खाली आप बोल दो. ओके थोड़ा ओके स्लो जाओ बोल रहे लोग आप, बट ठीक है ना. ओके ओके श्योर. सो वो आवाज चाहिए डिक्शनरी कि मार ले दे साहब मब मब बोल के. इवन मतलब इंटरनेट. जब आप बोल रहे नहीं ना, तो पीछे से कुछ ऐसा मार लिया ऐसा दिख रहा. हाँ ओके. जी. सो डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जहाँ पे अपन डेटा की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेम इज अ की एंड ए बी सी डी ई आर इट्स वैल्यूज. सो एग्जाम्पल के तौर पे नेम नेम की है और वैल्यूज उसका मतलब है. समझ नहीं आया? डिक्शनरीज अपन ये कर्ली ब्रेसेस से बना सकते हैं या फिर एक वर्ड है उसका डिक्ट. These are the two ways of creating a dictionary. Did you guys get? डिक्शनरी समझने आ गया आप लोगों को? ओके श्योर. नाइस. सो अपना सेकेंड टाइप है डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने का, लिस्ट्स. यहाँ पर अपन डिक्शनरी यूज करके डेटा फ्रेम बनाए. अब अपन लिस्ट्स यूज करके डेटा फ्रेम बनाएंगे. सो लिस्ट 1 में क्या करेंगे अपन? नेम्स डाल देंगे अपने ए बी सी डी एंड ई. लिस्ट 2 में अपन एजेस डाल देंगे लोगों के 18, 19, 20, 21 एंड 22. अब डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं अपन. सिंटैक्स क्या है? पीडी डॉट डेटा फ्रेम.
Did you guys notice डेटा फ्रेम का डी और डेटा फ्रेम का एफ दोनों कैपिटल है, बाकी के सब स्मॉल है, ठीक है। एंड नाउ name is list 1. We are just passing our lists in the data frame. Age is list 2. So if we check our data frame now, our data frame is created. You can take a look at it. Should I proceed? Yes. And now we have the third way, the last way. And mostly we use this way because we have CSV files. I hope you guys downloaded these two data sets. Did you guys download car dataset and IPL dataset that was sent in the group? Yeah, we just sent two datasets. Please download it and paste in the same folder that you are working in. Did you guys download it? डाउनलोड कर लिए सब लोग डेटा सेट? हेलो, After you download the dataset, that is .csv file, जो फोल्डर में आप डेटा एनालिसिस का जो फोल्डर बना के कर रहे हैं ना कोलैब के अंदर, वही सेम फोल्डर में वो दो फाइल्स को डालना रहता है। जैसा यहाँ दिख रहा है आपको मास मास की स्क्रीन पे, सैंपल डेटा है लेफ्ट कॉर्नर में, सैंपल डेटा आईपीएल डेटा डॉट सी एस पी बोल के है, देन कार डेटा सेट 2.csv, तो वहां आप लोगों को लाना है वो चीज। इफ हो गया तो चैट में यस डालिए या हैंड रेज या कुछ तो करिए। विल प्रोसीड। नहीं हुआ वेट करना तो भी बोलो, ऐसा खामोश बैठे तो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। एक बार बता सकते कैसा ऐड करना पड़ेगा? माजो एक बार दिखा दो ना कैसा ऐड कर सकते अपन कोलैब पे। what you do is, suppose you have a folder like this. Just copy and paste it.
I have already, so it will replace that, and you will get on your collab directly. सब लोग डाउनलोड कर लिए? Yes, people have downloaded, but they don't know how to यहाँ कैसा लाना फाइल्स आप अपने कोलैब की नोटबुक में। आप लोग फोल्डर जिसमें खोले ना उसमें पेस्ट कर दो कॉपी करके। आप लोग डाउनलोड कर लिए ना? डाउनलोड कर लिए तो यहाँ पर भी आ जाता है। फोल्डर्स हमला डायरेक्टली साइट से खोल के है, वैसा आप अच्छा, आप डेस्कटॉप लोग पे। डायरेक्टली साइट से खोलिए है? अच्छा ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ पर क्या करो, ये है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करो, नीचे फोल्डर है, फोल्डर पे जाओ, अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, सेलेक्ट करो एंड ओपन कर दो, वहां पर आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? रेज ऑफ हैंड्स इफ यस। अनएबल टू कैच अप। ब्रो देखो, आपका गूगल कोलैब नोटबुक है, उसके अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखते, टेबल ऑफ कंटेंट बोल के। और देखो मौज भाई का जो है, देखो उसके ऊपर क्लिक करो। आप क्लिक करें तो नीचे फाइल का आता, फाइल का जाओ, फाइल को क्लिक करो। देखो मौज भाई कर रहे, देखो फाइल को क्लिक करे बाद आप देन यहाँ ऊपर अपलोड द सेशन स्टोरेज बोल के आ रहा, देखो उसको क्लिक करो। क्लिक करके देन जो भी फाइल है उसको पकड़ो, पकड़ के ओपन कर दो, सेलेक्ट ओपन, दैट्स इट। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से करके दिखाते हो। आ गया समझ में? शुड वी नसीरुद्दीन। प्रोसीड? यस, आ गया कहते नसीरुद्दीन को। चलो ठीक है। As we have got our data here, are you guys able to see on your screen? Not on my screen, on your screen. Data frame 3 equals to, as the file format is CSV here, we have a function in Python which is read CSV. read CSV क्या करता, अपनी जो फाइल है ये इजीली रीड कर लेता है, मगर अपनी जो फाइल है ये अपने वर्किंग फोल्डर में रहना पड़ता, जो प्रेजेंटली है अपने पास, अपन जिसमें वर्क कर रहे हैं। सो क्या करना है यहाँ पे, सिंपली नेम टाइप कर देना एक्सटेंशन के साथ फाइल की, कार डेटा सेट 2.csv। आपके पास जो नाम है वही नाम टाइप करिए, शायद ऐसा भी आ रहा होगा आपके पास 1 करके, तो आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ता, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। So if we write head, we will get the top 5 records of our data frame. यस, पांडास को आप पीडीके से इंपोर्ट करते हैं एंड एवरी सेल को आप रन कर लेते हैं आना, सो आपका जो सही होता, प्रोग्राम सही चलता फ्रॉम अब आप रन कर लेते आना आफ्टर राइटिंग दैट। अगर सेल रन करना है तो शिफ्ट और एंटर दबाना, शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाए तो रन हो जाता सेल। ओके, आगे बढ़ेंगे अब। चलो ठीक है। नाउ वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अब थोड़े से बेसिक चीज़ें देख लेंगे यहाँ पे डेटा फ्रेम के साथ जो कर सकते हैं अपन।
इसकी हेल्प से अपन डेटा बहुत इजीली समझ जा सकते क्या तो भी है आखिरी डेटा अपना। तो पहले तो डेटा फ्रेम का अपना शेप क्या है देखना पड़ता। डेटा फ्रेम 3 डॉट शेप। अब अपने को वैल्यू एक टपल आया, उसमें वैल्यू आ रही 4340 और 8। तो 4340 नंबर ऑफ रोज है अपने, 0 1 2 3 4 एंड 4340। और जो 8 है ये अपने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So shape attribute will return us a tuple which will show the dimensions of our data set. It is a two-dimensional data set which have 4340 records and 8 columns. I hope this is clear. And now अपने पास और एक फंक्शन है और हेल्प करता वो डेटा समझने के लिए, which is describe. नेम से ही समझ गए होंगे डिस्क्राइब करता डेटा क्या कर रहा। देखो न्यूमेरिकल डेटा को डिस्प्ले कराने खाली। अब ईयर क्या है, इंटीजर है, सेलिंग प्राइस इंटीजर है, किलोमीटर ड्रिवन इंटीजर है। सो ये खाली तीन चीज़ों को डिस्प्ले करता होने, स्केच वैल्यूज बताता अपने को। मैक्सिमम 2020 मैक्सिमम है और 75% डेटा उसमें 2016 का है, 50% डेटा 2014 का है और 25% 2011 का है। और इधर और भी चीज़ आए, 4040 रिकॉर्ड से बोल रहा, और मिनिमम ये वैल्यू है इसकी 1992। सो डिस्क्राइब इतना ही है, डिस्क्राइब का काम ये ओवरव्यू देता डेटा का अपना, न्यूमेरिकल डेटा का। अब डिस्क्राइब के बाद और एक फंक्शन है इन्फो। इन्फो क्या बोलता अपने को, पूरे कॉलम्स में अगर कोई नल है क्या, मतलब कोई मिसिंग वैल्यूज है क्या रिकॉर्ड्स में अपने। सो क्या बोल रहा है यहाँ पर, नहीं है बोल रहा, नॉन नल, नॉन नल। और उसका डेटा टाइप बता रहा, नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है फिलहाल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ये दो जो तीन है, ईयर, सेलिंग प्राइस एंड किलोमीटर ड्रिवन, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। सो ये तीन बेसिक चीज़ें थे डेटा फ्रेम चेक करने के लिए। समझ गए आप लोग? 34th सेल। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स क्या करता, सपोज आपको मालूम करना है 2007 के कितने मॉडल्स है, खाली 2007 के, या फिर हर मॉडल कितने बार रिपीट हुआ सो है, 2012 का मॉडल कितने हैं, 2017 के कितने हैं, 14 के कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता अपने को, डेटा फ्रेम ऑफ ईयर, ईयर कॉलम में चेक करेंगे आप, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ओके, सो अपना डी डेटा फ्रेम 3 है। If we hit enter, as you can see 2017 के टोटल काउंट 466 है, मतलब 466 मॉडल्स 2017 के हैं। उसके बाद 421 मॉडल्स 2015 के हैं। लाइकवाइज हर एक ईयर के कितने मॉडल्स हैं यहाँ पर अपने को दिखा दिया है यहाँ पे। आर यू गाइस फॉलोइंग अप?
I'm not able to import the car data set to data frame 3. Are you using the right name? Muhammad Khadri. PD not defined for me. So import it like this. Import pandas as PD. एंड वो इंपोर्ट लिखे बाद रन नहीं करे शायद आप सेल एक बार देखो सेल रन होए तो आपको कुछ नंबर आता जैसा कि यहाँ 28 लिखे हुआ है अगर वो सेल रन नहीं हुआ तो वो नंबर नहीं आता Can you show the import code once again? Do we need to remove all this or can we just follow along the documentation? यार देखो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप चीज़ा करते हैं अब आपकी फर्स्ट क्लास है आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आप थोड़ा क्या बोलते देख लेना पड़ता उसके बाद फिर आपको जब आप डीपर जाते रहते इसके अंदर आपको मालूम होता ओके मैं ये प्रोजेक्ट है ऐसा रिक्वायरमेंट है तो मैं ऐसा बनाना बोल के राइट अमान आपका क्लियर हो गया जो सबका सबका इंपोर्ट कंप्लीट हुआ कोड वन यार। सेकेंड बोले थे ना 34 स्किल्स का 34 देखकर सेल करो 30 सेकेंड उधार करा सी दो अच्छा ये वाला है 34 आपका। देखो यहाँ जो CSV जो अंदर नाम है ना वो आपका जो नाम है वो लिखना अगर आप कोई दूसरा नाम के उससे अगर उसको सेव करे तो वहाँ वो नाम लिखना पड़ता जो यही सेम नाम एग्जैक्टली लिखना आपके पास नेम है ना वही चूज करो। अगर आपके पास ऐसा वन बोल के भी आता एक बार मैं देख लेता हूँ। यस आप आपको जो डेटा शेयर करे उसमें वन बोल के है सो ये इंक्लूड करे तो आपके पास आ जाता है। क्लियर है अभी आगे बढ़ेंगे अपन। सो वैल्यू अंडर स्कोर काउंट्स तो समझ गए ना सब लोग। अभी मिन मैक्स जैसा कि नाम ही है मिन मैक्स अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देता है डेटा के। अब ईयर का ही देख लो डॉट मिन डेटा फ्रेम में अपने सबसे छोटा कौन सा है 1992 है वैल्यू। मैक्स से अपने को आई एम सॉरी ओके 2020 या आप सही ऊपर से पूरे सेल्स रन कर लेते आए और अपने फाइल के नाम सही दिए तो सब रन होता थोड़ा केयरफुल रहो चीज़ों में एंड कुछ भी डाउट आ रहा आप रेज हैंड करो या फिर इसमें डालो चैट सेक्शन में ओके सो मिन मैक्स भी अपना कवर हो गया। मिन मैक्स देखे अपन वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देख लिए अपन इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब शेप देख लिए डेटा फ्रेम कैसा क्रिएट करते हैं 3 टाइप्स देख लिए डेटा फ्रेम के। अब ड्रॉप ड्रॉप मेथड ड्रॉप फंक्शन। अब सपोज ये मेरे को नेम वेरिएबल नहीं होने का ऐसे मेरे को कुछ भी काम ही नहीं है तो नेम को मैं निकाल देना चाह रहा हूँ। अगर नेम को मैं निकाल दिया तो मेरे पास कॉलम्स कम रहते मेमोरी एफिशिएंटली यूज होती और जो बेकार डेटा है इसकी मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं निकाल देता हूँ इसको और एनालिसिस में इजी हो जाता अपने। तो ड्रॉप करके देखेंगे अपन।
name column. Write data frame name dot drop name है अपना एक्सिस इक्वल्स टू 1. अब एक्सिस 2 रहते, एक्सिस 1 और एक्सिस 0. एक्सिस 1 जब भी करते हैं अपन, एक कॉलम को रिफर करता है एक्सिस 1, तो कॉलम डिलीट हो जाता, ड्रॉप हो जाता. 0 डाल दिया तो खाली रो होती डिलीट. और इन प्लेस और एक इसके अंदर कीवर्ड है जिसको अपने को ट्रू करना है. सो डेटा फ्रेम पे ही, डेटा फ्रेम से डायरेक्टली ड्रॉप हो जाता हूँ. अगर अपन डेटा फ्रेम देखिए अपनी, डेटा फ्रेम 3 डॉट हेड नेम चलेगा. देखो ईयर है, सेलिंग प्राइस है, किलोमीटर ड्रिवन है. और शेप देखे तो अपन, अगर अपन अगर आप लोगों को याद था तो इधर 8 थे अपने पास कॉलम्स, अब 7 हो गए एक डिलीट कर देने के बाद, एक ड्रॉप कर देने के बाद. तो ड्रॉप भी आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों का. सबका क्लियर है यहाँ तक? रेज ऑफ हैंड्स और रिएक्शंस, और किसको भी कुछ डाउट है जल्दी जल्दी, बिकॉज अपने को आईपीएल का प्रोजेक्ट भी करना है. ये जल्दी जल्दी खत्म करें तो आईपीएल का प्रोजेक्ट जल्दी कर सकते हैं अपन, नहीं तो फिर अपने यस, को टाइम कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, प्रोजेक्ट मिस हो जाता अपना. चलो बिस्मिल्लाह आईपीएल का ओके, प्रोजेक्ट. अब यहाँ तक देख लिए अपन बेसिक चीज़. अपन अब अपना प्रोजेक्ट करने रेडी है. अब ये जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है अपन डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे. मैटप्लॉटलिब बेसिकली है क्या? एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से अपन विजुअल्स उतार सकते हैं. डेटा को अपन ग्राफ्स में, चार्ट्स में, बार्स में, पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना. अब वो कैसा करते हैं देखेंगे. सो रेडी है ना? अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना. यस डाल दो जल्दी, यस बोले तो. रेज हैंड कर दो ना तो. अगर हाँ चलो ठीक है, यू गाइस फॉलोइंग अप राइट. सो अब अपन डेटा फ्रेम बना लेंगे अपनी आईपीएल डेटा. अब सिंटैक्स क्या है उसका? pd डॉट डेटा फ्रेम, फाइल की नेम दे देना है IPL underscore data underscore 2008 to 2023 dot CSV. Okay. Let me check. Okay. Oh, sorry, we are importing data, right? So we have to put it here. Date CSV. My bad. IPL data 2008 to 2023 dot CSV. Right. So we have created our data frame now. Let's just check our data. So as you can see, we have number of columns
season, short name, home team, away team, toss win. Are you guys able to see this data frame in your collab? Did you guys create the data frame? Yeah, very good. So as you can see, there are a lot of columns, but we are not able to see all of those columns at once. See here, dot, 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 dot. It skipped some columns here because of space on screen. So if we want to see all of the columns, we can see by using data frame name dot columns, which is IPL data dot columns. It will give all the columns that we have in our data. See here. And if you want to know how many columns do we have, just write columns columns using the len function. We have 37 columns. If you talk about shape, we have 1032 rows and 37 columns. For our analysis, we do not need this many columns. So what we'll do is we'll skip some columns that we don't need in our analysis. In order to make our analysis easy, let's skip some columns. So syntax क्या था उसका? IPL data dot drop. अब मल्टीपल कॉलम से अपने को ड्रॉप करने का. So अंदर लिख रहे हैं अपन कॉलम्स और एक लिस्ट बना ले रहे हैं जो जो कॉलम्स अपने को ड्रॉप करना है, जो यूजफुल नहीं है. आईडी है, आईडी अपने को यूज में नहीं है. नेम, एंड ओके, description. Do we have description here? No. Okay. What is drop? Can you explain once again? Drop. Okay. Drop is a function in Python. So drop करता क्या? अगर अपने को कोई कॉलम नहीं यूज करना है या उसके अंदर का डेटा अपनी एनालिसिस में यूजफुल नहीं है, तो अपन क्या करते, वो रखने के बजाय अपन उसको डिलीट कर देते कॉलम. सो क्या करता कॉलम, अब सपोज ईयर मेंशन करे तो ईयर को डिलीट कर देता, बाकी का इतना ही डेटा फ्रेम रखता हो. जैसा अपने पास पहले नेम भी था ऊपर, एज यू कैन सी नेम था यहाँ पे, अपन नेम को क्या करे ड्रॉप कर दिए. यहाँ पे ड्रॉप नेम बोले तो उन्हें क्या करा, अपना फंक्शन नेम ड्रॉप कर दिया. अपने पास यहाँ पर बाकी की डेटा फ्रेम थी फिर. और यहाँ पर एक्सिस 1 है, उसका मतलब है कि कॉलम ड्रॉप कर दो, कॉलम डिलीट कर दो. अगर एक्सिस अपन 0 दे दिए तो उन्हें क्या करता, रो ड्रॉप कर देता एक एक करके. और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू बोले तो यही डेटा फ्रेम के अंदर डायरेक्टली कर दो. क्लियर है? ड्रॉप. ओके, मिस बार राइट. सो अब जो जो भी यूजफुल नहीं है अपन यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहे हैं. रिजल्ट यूजफुल नहीं है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. जिसकी अपन कुछ भी एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो अपन उसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे.
this one is venue ID. Okay, so we'll drop. So here we don't have ID. Okay, I already cleaned this data, I think. Okay, so we do not have these columns in our data set, as I already cleaned and sent you the data set. I forgot that. So let's just remove this line, or if you want to keep, just comment it for future purpose. Control/ will turn that into a comment. We'll start with our visuals now. So did you guys notice we have something called NaN here? It represents missing values. Data was not entered properly. So ये मिसिंग वैल्यूज को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है एक डेटा एनालिस्ट का. अगर ये रख के अपन एनालिसिस करें तो अपने रिजल्ट्स खराब आते, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते. सो अपन क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते. रिमूव कैसा करते वो देखो अभी. Are you guys following up, or you are confused still? Everything is fine, right? Write a message, yes, no, like. Okay, so we'll just do drop in. So what it did is it cleaned all the null values. Can you see? We had some null values, right? NaN, 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 NaN. This drop NA method or function will clean all the missing values in our data. So if we check IPL data dot head, and see again, even after cleaning the data drop NA, we are still getting NaN. Why is it so? Because we have not updated this. If we have to update this, we have to write in place. वहां पर कर दो उसको बोल के. In place equals to true. See, NaN सब चले गया. तो ड्रॉप एनए से अपन क्लियर कर दिए. अब डेटा अपना क्लीन हो गया. डेटा को थोड़ा अपन स्टडी भी कर लिए.
अब डेटा पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, चेक कर लेंगे कि हर सीजन में कितने मैचेस हुए। हाउ विल वी डू दैट? So our first metric will be total matches per season. So import matplotlib dot pyplot as plt. Ready? Can you repeat previous step? Sure. So अपने डेटा में ये नैन नैन बोल के आ गया था, जो मिसिंग डेटा है। इसके अंदर डेटा प्रॉपरली एंटर नहीं कर रहे थे, तो अपने को क्या है ना, ये क्लीन करना पड़ता है एनालिसिस करने से पहले, या तो अपनी एनालिसिस इनएक्यूरेट होती है। अपन अब क्लीन कैसा कर सकते हो, अपने पास एक फंक्शन है ड्रॉप एन ए बोल के डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एन ए मतलब ड्रॉप ऑल मिसिंग वैल्यूज, ड्रॉप ऑल नल वैल्यूज इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करे तो विद इन दैट डेटा फ्रेम डायरेक्टली कर देता हो। नहीं तो अपने को अगर अपन वैसा नहीं करें, सपोज अपन कैसा करें उसको, इन प्लेस नहीं लिखे अपन, इन प्लेस नहीं लिख रहे तो अपने को एक न्यू डेटा फ्रेम बनाना पड़ता, क्लीन डेटा फ्रेम बोल के। तो जब अपने को फिर ये क्लीन डेटा फ्रेम यूज करना पड़ता, आईपीएल डेटा नहीं यूज कर सकते अपन। तो उससे बेटर क्या है, अपने को उसकी जगह पे अपन क्लीन कर दे रहे हैं यूजिंग इन प्लेस। तो इसका मतलब है वही जगह पे कर दो क्लीन बोल के। अब क्लियर है आपका ड्रॉप इन है? Yes. इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करो, लाइक दिस। आप चैट में से ओके, अभी भी आ रहा है एरर आपको इकरम? अलीम भाई क्या क्वेरी है, एक बार पूछ सकते हैं आप? इसको कह रहे हैं initiate those commands on chat कहते हैं। श्योर। IPL data dot drop in place equals to true. Make sure true का T कैपिटल रख रहे हैं आप लोग। हाँ भाई, अभी अपना रैप कितनी देर में होता रैप अप? 10 मिनट्स में हो जाता है अपना, हो गया खत्म। ओके। खाली ग्राफ से अपने पास ही लोगों को अगर क्लीन हो गया डेटा तो कर ले सकते हैं। चलो डन हो गया उनका। सो अपन अब चेक करेंगे टोटल मैचेस पर सीजन। अपन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी नेट डिस्कस कर रहे थे ना। सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पाइथन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइज करने के वास्ते। अब आप लोग आए देखे होंगे इतना डेटा कोई भी नहीं स्टडी कर सकते हैं इसको इजीली, राइट? देखे तो क्या समझ नहीं आ रहा, आपने कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसको ये डेटा को अपन ग्राफ्स में अगर डिस्प्ले करें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं अपन डेटा। तो ये पाइप्लॉट एक सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब की, जो अपने को एक मैटलैब बोल के सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं अपन। उसके वजह से ही अपने को इंटरफेस देता हूँ उन्हें विजुअल्स में अपने। सब अपना पहला क्या है, और अपन इसको पीएलटी बोल के डिनोट करेंगे पूरे चीज को, इतना बड़ा अपन नहीं लिखते जाएंगे बार बार। सो ये टाइप करके एग्जीक्यूट कर लिया ना सब जने। सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, टोटल मैचेस पर सीजन देखना है अपने को। तो क्या करना, सीजन इक्वल्स टू df ऑफ IPL डेटा अपना, अगेन आई फॉरगॉट, IPL अंडरस्कोर डेटा।
अब वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देख लिए थे अपन, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करिए तो अपने पास सीजन्स आ गए। 2022 में 73 मैचेस हुए, 2013 में 73 हुए। अभी इसको अपन एज अ प्लॉट डिस्प्ले करेंगे। तो अब इसकी अगर टाइप देखें, टाइप ऑफ सीजन्स मतलब क्या डेटा टाइप है, सीरीज बोल रहा हूँ, तो एक किस्म से डिक्शनरी के वैसे काम करता हूँ। सीजन डॉट कीज करा मैं। सो देखो अपने को एक अरे दे दिया पूरे ईयर्स की। अगर सीजन डॉट वैल्यूज करा मैं, सीजन्स सो अपने पास क्या करा उन्हें पूरे उन के काउंट दे दिया 2022 में 73 हुए ऐसा। तब इसको अगर अपने को प्लॉट में डालना है तो अपना शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, PLT है। PLT डॉट बार, उसके अंदर x इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 है। तब x और y में क्या डालना अपन, x और y के अंदर अपन कीज और वैल्यूज डालना है अपने। तो क्या है अपने SEASONS डॉट कीज सीजन्स डॉट वैल्यूज। ओके, एक बार रन करके देखेंगे। क्या बता रहा है यहाँ पे, ओके राइट। तो एक्स वाई हटा दिए अपन। सो देख सकते हैं कि अपने पास एक विजुअल आ गया यहाँ पे। अब इसमें देखें तो कोई भी समझ सकता है कि भाई 2008 में नियरली 40 मैचेस प्ले करे, 2010 में 2009 में नियरली 54-55 मैचेस प्ले करे, ऐसा कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिस है अपने पास, तो टाइटल ऐड कर लेंगे। PLT डॉट टाइटल, टाइटल क्या है अपना, मैचेस पर सीजन। सी अपने पास एक टाइटल आ गया विजुअल में अपने, और अपने पास एक ग्राफ है, देख के अपन पूरा समझ जा सकते हैं यहाँ पे। सो पहली मेट्रिक क्लियर है सबको, कोड देख लो एक बार फिर भी, इतना कोड है अपने पास। नेक्स्ट मेट्रिक कैलकुलेट करने जाएंगे, विजुअल करने। यस नो हैंड एग्जीक्यूट हुआ आप लोगों के पास, आई वांट टू नो। चलो ठीक है, ओके। आई होप सबके पास हो गया वो एग्जीक्यूट, सिंपल ही था। चेक कर लिए अपन सबसे पहले टोटल मैचेस पर सीजन। अब सेकेंड चीज क्या करेंगे अपन, ये चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा मैच विनर्स कौन है, मोस्ट मैच विनर्स। तो कौन होंगे सबसे ज्यादा मैच विनर्स, देख लेंगे वो भी। विनर्स इक्वल्स टू IPL डेटा ऑफ विनर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। सब ये क्या करता, हर टीम के कितने वैल्यूज है देख लेता हूँ विनिंग के। अब विनर्स का देखे अगर अपन डेटा, सो मुंबई अंबानी इंडियंस, सबको मालूम है अंबानी की वजह से मुंबई टॉप पे रहती है हमेशा।
137 मैचेस मुंबई जीती, सीएसके है उसके बाद फिर 125, 117, आरसीबी 113, हैदराबाद 105। सब ये देख के तो समझ गए होंगे सब जने अब तक अपन सही जा रहे हैं, अपनी एनालिसिस सही चल रही, ठीक है। सब क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे अपन, PLT डॉट बार विनर्स डॉट कीज कॉमा विनर्स डॉट वैल्यूज, फिर टाइटल भी ऐड कर देंगे अपन, टाइटल इज मोस्ट मैच विनर्स। सी, अब जिसको नहीं मालूम होगा, कोची, पुणे वॉरियर्स, इंडिया भी पहले टीम्स थे दो जो चले गए, उसके बाद गुजरात लायंस, आरपीएस आई, वो लोग थोड़े मैचेस ही खेले जीते, इसलिए उनके लोगों के बार्स बहुत कम है, और पंजाब तो हमेशा ही हारती बेचारी। अब ये है जो टॉप 5 टीम्स है, मुंबई, चेन्नई, केकेआर, आरसीबी, एसआरएच। तो अब क्या है, मिस्टर एलेक्स को ये विजुअल्स दिखाए तो उसको समझ नहीं आता, भाई ठीक है मुंबई है एक अच्छी टीम, चेन्नई है, फिर हैदराबाद भी अच्छी टीम है, एक 5 टीम देख लिया हमने, फिर ये भी मालूम हो गया कि उसके हर सीजन में कितने मैचेस हुए बोल के, इसके बेस पे क्या हुआ है, ये देख लिया कि भाई ये टीम्स है, 5 टीम्स शॉर्टलिस्ट कर लिया, मैंने बाकी के निकाल दिया समझो, 5 टीम्स शॉर्टलिस्ट कर लिया। आगे बढ़ते अपन एनालिसिस में, अब थर्ड एनालिसिस अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट टॉस। भाई एक बार विनर्स का कोड वापस बता सकते हो? श्योर, चेक करिए, हो गया, हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपनी एनालिसिस खत्म करेंगे। अब अपनी थर्ड एनालिसिस क्या रखेंगे अपन, मोस्ट टॉस विनर्स। अब सबको तो मालूम होगा टॉस की वैल्यू कितनी है, अगर टॉस जीते तो ज्यादा चांसेस रहते हैं अपने पास मैच जीतने के। सब ये भी देख लेंगे अपन एक मेट्रिक, भाई कौन सी टीम ज्यादा टॉसेस जीत रही बोल के। सो टॉस विनर्स इक्वल्स टू अपना डेटा फ्रेम आईपीएल डेटा, क्या है अपने वेरिएबल का नाम, टॉस वन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, लोगों को प्लॉट करेंगे, PLT डॉट बार टॉस विनर्स डॉट कीज, टॉस winners dot values, PLT dot title most toss winners। If we execute this, देखो अगेन कौन आ गई इस टॉप पे, मुंबई आ गई, मुंबई के बाद दिल्ली कैपिटल्स है, फिर कोलकाता है, फिर ऐसे ही टॉस जो सबसे ज्यादा अब तक टॉसेस जीते। क्लियर है अपनी, कोड दिखाना कहते हैं भाई एक बार, या फिर आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दो ना, कौन सा वाला मैच विनर्स का मैच, शायद। हाँ ओके श्योर। सबको समझ नहीं आ रहा ना अब तक, अपन क्या करें, हाथ 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 बता दो एक बार ताकि मैं देख सकूं। साउंड्स गुड, चलो बढ़िया। तो अपन वापस जाएंगे, अब क्या है, अपन 3 मैट्रिक्स देख लिए, एक तो देख लिया टोटल मैचेस कितना है, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, टोटल मैच विनर्स का है इम्पैक्ट, तो मुंबई है सबसे ज़्यादा, और फिर क्या है उसके बाद टॉस विनर्स,
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मुंबई आ गई। तो अब बेस्ड ऑन दिस 3 फैक्टर्स अब तक तो अपन कंक्लूड करेंगे भाई मुंबई में इन्वेस्ट करना बोल के। तो अब और एक मेट्रिक कैलकुलेट करेंगे अपनी फोर्थ वाली, उसको अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ज्यादातर क्या ऑप्ट करते हैं बैट्समैन या टॉस जीत के टीम्स, बैटिंग चूज करते हैं टॉस जीत के या बॉलिंग चूज करते हैं? बस भाई आप क्या करते रहो मालूम, जैसा आप प्रोग्राम टाइप वो कमांड टाइप कर रहे हैं वो चैट पे भी डालते रहो, तो अल्लाह भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, as we are already running out of time। हो गया अपना खाली खत्म या पे? नहीं मतलब Sure. बच्चे भी पूछ रहे कैन यू प्लीज पेस्ट बोल। पेज द प्रोग्राम इन द चैट्स। अगर आपको कौन सा वाला होना है वो एग्जैक्टली डाल दिया तो मैं कॉपी पेस्ट करके डाल दूँ, क्योंकि बहुत कोड है अपने पास। तो आप ये पूछ रहे नहीं हैं नहीं, मेरे ख्याल, अच्छा आप सबका करते बोल करते रहे डालो बोल रहे हो ना। हाँ नहीं हो? नहीं, ओके ओके। आप जो कर रहे हैं आप फोर्थ वाला उसका भी करते करते डाल दो बोल। हाँ चलो ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो चेक करेंगे अपन अब। तो अपन क्या करेंगे, प्रेफर बोल के एक वेरिएबल बना लेंगे। टॉस प्रेफरेंस क्या है टीम्स की, तो अपना डेटा फ्रेम क्या है, आईपीएल डेटा। कॉलम नेम क्या है अपना, डिसीजन। तो एज यू कैन सी बाउल फर्स्ट प्रेफर करते, सबको मालूम है, सबको बाउलिंग करना रहता है, चेस कर लेंगे बोल के जिस कम स्कोर पे अपोनेंट को रोक के। सब इसको प्लॉट कर देंगे अपन। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या भाई खाली बार प्लॉट ही यूज करते जा रहे हैं अपन, एक ही प्लॉट दूसरे का एक नहीं यूज करेंगे? वो डेटा पे डिपेंड करता है अपने पास क्या टाइप का डेटा है। अपन अभी तक तो कैटेगरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं, मतलब ये जो नेम्स है टीम के, न्यूमेरिकल डेटा आता है और एक 120 100 जैसा है ना, वैसे अपने का वेरिएबल्स रहते हैं, और अपने पास अभी नहीं है, वो आगे करेंगे अपन। तो जब तक अपने को यही यूज करना पड़ता है। तो टाइटल भी आ गया, लेट्स जस्ट कॉपी और कोड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। डन। ये हो गया ना फोर्थ वाला? अब चेक करेंगे, प्रोसीड करूँ आगे नेक्स्ट एनालिसिस पे, जल्दी जल्दी खत्म करना है अपने को। डन। तो कौन सी अपनी फिफ्थ मैट्रिक्स है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज इनिंग स्कोर्स। तो इसको कैसा देखना अपन, स्कोर्स चेक करना पहले। आईपीएल डेटा, गाइस गिव मी 1 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ जरा। मीनवाइल आप लोग कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक? Isham is there, Isham will clarify the doubts। एनी डाउट्स अब तक, ये कैसा हो रहा हो कैसा हो रहा? द थिंग इज आपला हे पहिली बार करा आप लोग, बस कैसा रहता बोलतो आपला
इन डेप्थ में नहीं समझे बट ऊपर ऊपर से समझ के भी करे तो आपको हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस आता, देन ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को आप लेके जब आप खुद से करने जाते ना तो आपको बहुत हेल्प होती। कोई आप अगर डायरेक्टली करने गए तो स्टक हो जाते, राइट। इस अगर आप ऐसा मतलब किसकी भी हेल्प, अब जैसा कि आप मास भाई के साथ साथ कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को अटकते नहीं, अटके तो भी जल्दी वो हो जाते हैं। तो इससे किक स्टार्ट मिल जाता, देन आप लोग खुद से अपनी जर्नी को और जबरदस्त कर सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे अपन। स्कोर का है अपना। ओके, तो स्कोर हाइड हो गया अपना। स्कोर चेक करेंगे पहले। तो क्या है, ओके, होम रन्स। ये लास्ट मैट्रिक है नहीं? या ऑलमोस्ट। या ओके, सो रन्स कैलकुलेट करेंगे अपन, एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम कितना है। तो ये होम टीम है समझो। अब कैसा भी एक होम टीम रहती, एक अवे टीम रहती। अब होम टीम सपोज बैट कर रही, तो होम टीम कितना स्कोर कर रही चेक कर लेंगे। तो मैक्स स्कोर इक्वल्स टू डॉट मैक्स मिनिमम स्कोर एवरेज भी मैटर करता ना। सो मीन मतलब एवरेज। अब देख मैक्स स्कोर कितना है, 263। याद है किसी को कौन बनाई थी 263? आरसीबी बनाई थी। बहुत ज्यादा। गेल था शायद उस दिन, नहीं गेल मारा। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली मारे थे। अच्छा, हम्म। मिनिमम किसका है? मिनिमम तो असल में कोची टस्कर्स का है, डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट, मगर वो डेटा अपने पास नहीं है। तो ये भी बैंगलोर का ही है लोएस्ट 58 ओह, कोलकाता के अगेंस्ट। हाईएस्ट भी नहीं छे, लोएस्ट भी नहीं छे। यस, सबको मालूम है वो। बोलने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अब एवरेज स्कोर देखेंगे। एवरेज क्या है, 158 जा रहा। सो एक ओवरव्यू देख लिए होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज को काउंट करने का। तो अपन सो फार ने एनालिसिस करें, टॉस प्रेफरेंस चेक कर लिए, मोस्ट टॉस विनर्स चेक कर लिए, मोस्ट मैच विनर्स चेक करें, मैचेस पर सीजन चेक करें, और अपने पास क्या है, बहुत से मैट्रिक्स है। और अगर अपन पूरा कैलकुलेट कर लेते गए तो अपना मेन पार्ट जो एआई का है ये सेशन के बाद वो कंप्लीट नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस यहाँ पर अपन स्टॉप करेंगे। अब इधर जाएंगे इनसाइट्स में। सो मिस्टर एलेक्स को क्या क्या होने का था, इतने चीज़ें मालूम करके बोलो बोले मिस्टर एलेक्स अपने को।
सो अपन क्या कर लिए अब तक, मैचेस पर सीजन चेक कर लिए, मोस्ट मैच विनर्स, टॉस विनर्स चेक कर लिए, मैक्सिमम मिनिमम ये भी चेक कर लिए अपन, स्कोर। एक लास्ट देख लेंगे ये वेन्यूज एंड मैचेस, कौन से वेन्यू पे ज्यादा मैचेस हुए, या प्लेयर्स विद मोस्ट मैचेस एज कैप्टन, दोनों में से कोई एक बोलो कौन सा करेंगे। मास भाई आप ये आपकी नोटबुक में लिख के अपन भेज देंगे ना, बिकॉज श्योर। उनका सेशन वो हो जाता फिर डिले हो जाता। हाँ ठीक है। सो अब नोटबुक पे लिख के दे दो ना, रन कर लेके देख लेते। ओके, अपन क्या करेंगे अभी, स्टॉप करेंगे यस। तो अपना एनालिसिस का पार्ट। आई होप आप लोगों को ये एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा, डेटा एनालाइज कैसा करते हैं अपन। पांडास और मैटप्लॉटलिब का आपको छोटा सा आइडिया मिल गया, अपन ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, इसलिए अब अभी स्टॉप करके अपन मेन पार्ट पे फोकस करेंगे। तो मैं इधर मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। आई होप आप लोग अब तक जो भी हुआ यहाँ पर समझ गए। कोड आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, ठीक है, और जो भी डिफरेंट मैट्रिक्स है पूरे ऐड करके भेज देता हूँ, इजंट इट? ठीक है, यस चलो डन। श्योर। I'll stop sharing my screen now. हाँ अच्छे से मास, तो अभी नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम। that's great Mas bhai, thank you for your wonderful session. We got very good insights about data and all. Now let's start with Rashid's session. Rashid. Yes, assalamu alaikum guys. Give me 1 second. I'm gonna share my screen. Yeah, is my screen visible? Alim bhai? Yes Rashid. Okay, right. Let me get set up. आप लोगों के charts वगैरह दिखे जैसा अलग screen पे डाल ले रहा हूँ मैं. Right. Okay, interactive रहो guys. I know online में मुश्किल रहता compared to offline, but yeah. Let's get started with the main session of the day, अपना main topic of the day actually, neural networks. I know many of you must be from offline session जो day 1 पे हुआ था. Neural networks we already did to some extent, but many of you are also new over here, so we decided we are going to revise a bit of the topics that we did in neural networks, because आगे जो करने वाले हैं आज is based on that. उसका practical code में कैसा implement करना वो करने वाले हैं अपन. That's why आपको पूरा pandas, matplotlib, data के साथ कैसा work करना, all that बताए. So yeah, just try to be interactive. I will be asking questions, answer them in the chat, and we might have a quiz in between, so be ready for that. Okay, so the agenda for the day. Offline में we already did AI ka, what it is, why we need it, and the types of AI, and the key concepts under AI, that is machine learning, neural networks, and deep learning. उसके अंदर we discuss कि neural networks is one of the cornerstones or the main cornerstone of AI in this day and age. Every single AI that you see around you is made on top of neural networks. And that is why we'll be revising the structure and the weights portion of neural networks. And then we'll be doing a little bit of something called ReLU, that's a renewal activation function. I'll be getting into that for like 2 or 3 minutes. Cost function again is machine learning ka part, like how the actual machine learning happens, how it decides if some output is good or some output is bad. Right. Okay, starting with the structure of the neural network. Philosophy क्या है पहले तो neural network की. What is neural network? For those of you that don't know, before that actually I would like to conduct a sort of survey. How many of you are here from offline and remember the neural networks session? Raise your hand. Yeah, any of you who are from offline, just raise your hand. जिसको neural networks का session में बैठे थे. Okay, just a few of you, not a lot. Okay. Okay, then that means I will explain nicely then, so just glossing over things. 5 of you, I think. Okay.
Yeah, starting with the structure then. Neural networks ka structure and philosophy. First of all, as I told you, most important thing in AI, neural networks. And what it is simply is an imitation of human brains, imitation of the way our brains work in order to do things that only we can do and computers can't. For example, let's say आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं कोई नंबर को recognize करो. यू आर टेलिंग के फॉर एग्जांपल ये 3 लिखा हुआ है, इसको रिकग्नाइज करो. देयर इज नो वे टू प्रोग्राम दैट इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग. आप ऐसा कुछ इफ स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स लिख लो, फॉर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कौन से भी स्टेटमेंट्स बना लो, यू कैन नॉट हैव अ प्रोग्राम दैट रिलायबली रिकग्नाइजेज अ हैंड रिटन डिजिट. जो अपना OCR रहता, डिजिट्स एंड लेटर्स रहते, यू कैन नॉट मेक अ प्रोग्राम इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग. उसके लिए एंड मैनी 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 अदर थिंग्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन वगैरह के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं. दोज आर थिंग्स दैट मोस्टली अपने न्यूरॉन्स यानी अपना ब्रेन इज वेरी गुड एट डूइंग, बट कंप्यूटर्स आर्ट. सो वी ट्राई टू सिमुलेट, मैनी ऑफ यू माइट नो फ्रॉम बायो कि अपना न्यूरॉन्स रहते ब्रेन के अंदर एंड लाइक दे माइट लुक समथिंग लाइक दिस, and we try to simulate that structure in a computer in a very simplified fashion. यहाँ पे सर्कल्स दिख रहा है आपको, वेरी सिंपल रहता है इसका जो बेस यूनिट है, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड इन सम सर्टन वे. इसमें कुछ लेयर्स रहते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, एंड they almost sort of mimic what we are doing as humans and recognizing objects, letters, digits, etc. So moving on with the example of numbers, let's start with the building block of neural networks, that is a neuron. Neuron is nothing but a number. Keep this in mind. Quiz question है. Neuron is nothing but a number, a thing that holds a number. अपने handwritten digits के example में, for example, pixels ले रहे थे अपन, and in that we had grayscale values, जहाँ पे 3 यूं draw कर रहे हैं, वहाँ पे white हो जा रहा, and other pixels are black. So neuron could be अपन similarly, let's represent it as a value between 0 and 1, and let's assign 0 to black and increasing values to more and more white values. 0.2 पे थोड़ा gray हुआ, 4 पे और gray हुआ, 0.6 पे और white हुआ, ग्रे स्केल वैल्यूज असाइन कर दिया अपन. दैट इज योर बिल्डिंग ब्लॉक एंड उतना ही है उसके बारे में. दैट इज वेरी सिंपल थिंग. अब उससे अपन न्यूरल नेटवर्क कैसा बना रहे हैं? अरेंज इट इन अ फैशन दैट गिव्स यू द डिजायर्ड आउटपुट. अब उसका मोस्ट कॉमन तरीका, कॉल या मोस्ट कॉमन तरीका उसका क्या है? 3 लेयर्स, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट. इनपुट, हिडन एंड आउटपुट में आपको इंडिविजुअली समझाता हूँ क्या है. जस्ट कीप इन माइंड कि these circles are the neurons we just talked about, and each neuron in the previous layer, ये first layer है for example, this is the second layer. Each of these neurons in the first layer are connected to each of the neurons in second layer. For example, first layer का let me get into drawing mode. First layer का connected to this, connected to this, connected to this, connected to this. Similarly, second neuron in the first layer connected to this, connected to this, connected to this, connected to this. All of those neurons are connected into the neurons of the next layer. That's why थोड़ा complicated दिखता है, but that is how the structure of a neural network works. Moving on. यहाँ पे एक एग्जांपल है. Someone made a meme rating network and memes को rate कर रहा उन्हें. But moving on to a more serious example, अपने numbers का. How would you explain a computer to recognize this? You can't do it by conventional programming. Neural network से करना है. Let's get into more technical details. कैसा होता है? I'll give you a live example of it working. ये final बना दिया अपन पूरा. Don't get overwhelmed by this. ये पूरा बनाए बाद ऐसा दिखता our neural network that recognizes digits. अब वो कैसा work कर रहा अपन एक देखेंगे एक बार animation से. Just focus on the animation. एंड में 7 बोल के आउटपुट आ गया. यू माइट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ ऑलरेडी यूजिंग इंट्यूशन के इनपुट लेयर क्या है, आउटपुट लेयर क्या है. इनपुट लेयर इज सिंपली and before that actually let's do more examples to show you कि भाई this is an actual thing. यहाँ पे क्लियर कर दिया मैं. I write any digit. Can anyone type any number in chart 1 to 9?
फर्स्ट पर्सन का ले ले तो मैं any number in chart 1 to 9 1 2 3 4. Okay, Abdullah Sheikh 5, you are first in chart. Congrats. 5 यहाँ पे लिख दिया मैं any manner में pressed check digit some steps कर रहा हूँ just watch. Recognize कर लिया कि it's 5. Simple as that. Well, not actually simple क्योंकि input output layer is simple, but how does it actually know कि it's 5? So let's get into the technicalities of that. Again, जो इमेज अपन ले रहे हैं इनपुट, फॉर एग्जांपल मैं 3 ड्रॉ कर देता अभी 5 के जगह, तो इट इज़ नथिंग बट पिक्सेल्स विद ग्रे स्केल वैल्यू. उसमें जिधर brightest parts है उसके are represented as 1 and the borders are a bit grayish and they're represented by in between values like 0.7, 0.6, 0.2 and all the other values जिसको अपन pixels जिसको अपन touch नहीं करें they are represented as 0. Therefore कुछ भी इनपुट जिसको अपन नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको न्यूरल नेटवर्क्स में घुसा सकते हैं अपन. आई शो यू फॉर एग्जांपल अपनी इमेज को कैसा अपन सिंप्लीफाई करके एज न्यूरॉन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनपुट लेयर में. अगेन 9 ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पे 28 by 28 पिक्सल्स की इमेज है, दैट्स 784 पिक्सल्स. And now how do you put this into the input layer? Just watch the animation carefully. There. उसमें क्या हो रहा है? Just explain once. All the pixels are being separated layer by layer है वो, first row, first column, second row, first column, dot 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 dot. Split them up. एक लाइन में ले लो पूरा को. Split them up. एक लाइन में ले लो instead of having all these rows and columns. ले लेके just put them in a single. Imagine a list. एक list बना लिया अपन. हो गया. These are literally just pixels को अपन न्यूरॉन्स में represent कर रही है, 0 to 1 के वैल्यू के बीच में 784 न्यूरॉन्स बन गए अपने ऑलरेडी. Turn them around, सीधा कर लो. That's it. That's your input layer. Input layer already समझ गए अपन. Just raise your hand if you understood input layer. Yeah. Okay. Nice. 7, 9, 8. 8 people. We have 30 people over here. Come on, guys. 10 people. Just raise your hand if you understood what an input layer is. And if you have a doubt, speak up or put something in the chat. Is there any specific reason why we are using 784? No specific reason. 784 is the number of pixels we have, as I've said before. अपन इमेज को 28 by 28 pixels का लिए थे. 28 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 28 pixels, and then in the this direction horizontally 1 2 3 4 5 6 7 8 28 pixels है. That means 28 by 28 784 pixels. This could have been a 4 by 4 image, 10 by 10 image, 20 by 20 image. 28 by 28 का लिए बोले तो that's good enough. ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है. अच्छा खासा ड्रॉ भी कर सकते हैं अपन इतने स्पेस में, and बहुत ज़्यादा भी नहीं है वो. Simple as that. Is your doubt clear? Yes. Okay. Right, we I think got some 12 15 raise of hands. I guess 12 to 15 people are listening then. Anyways, we'll move on. Yeah, अपना input layer is pretty simple. अभी देखे अपन and everyone has understood that. Output layer क्या है बोले तो again simply the output जो अपन देख रहे थे example से you must have understood. 9 है तो यहाँ पे 9 आता. 1 ड्रॉ करे थे तो यहाँ पे 1 वाइट हो जाता. 0 ड्रॉ करे तो यहाँ पे 0 वाइट हो जाता. So this is basically the output layer. उसके नाम से ही मालूम हो रहा और उसके काम से भी मालूम हो रहा. Then बीच में क्या है पूछेंगे आप लोग मेरे को कि what is this second and third and dot 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 और भी हो सकते by the way. बीच के layers क्या है? Hidden layers is not some question I'm asking. It is literally the name of the middle का part. Hidden layers रहता है इसका नाम. Input layer, hidden layer, output layer. Now let's see exactly what these hidden layers do in this specific example number के. For that, let's try to understand a specific concept. ये जो numbers digits है अपने 9, 8, 4 जो भी अपन draw कर लेते हुए आ रहे, they can be split up into parts. Split up into parts. Divide and rule. Okay.
So for example 9, and these parts are repeating. For example I'll show you 9 में एक टॉप पे सर्कल दिख रहा और एक लाइन आ रही नीचे. सर्कल प्लस लाइन इज अ 9. एंड 4 फॉर एग्जाम्पल 8 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, सेम टॉप वाला सर्कल आ रहा और एक बॉटम वाला सर्कल आ रहा. दोनों को अलग से लिख लो, टॉप वाला सर्कल बॉटम वाला सर्कल. रिपीट हो रहा है यहाँ पे, टॉप पे सर्कल है, टॉप पे सर्कल है. 9 and 8 both have a quote unquote टॉप का सर्कल. एंड 4 सॉरी 4 में वी हैव अगेन एक ऐसी वाली लाइन straight over here, and then a horizontal line over here, and then a लंबी line over here. This लंबी line is very similar to 9 का लंबी line. एक कॉन्सेप्ट के टर्म्स में सोचो. आप बोलेंगे भाई ये तो थोड़ी टेढ़ी सी है, ये थोड़ी सीधी सी है. नहीं, कॉन्सेप्ट में सोचो. लंबी लाइन, यहाँ पे भी लंबी लाइन है बीच में, लंबी लाइन लंबी लाइन. वैसे टर्म्स में सोचता न्यूरल नेटवर्क. So that's the concept. Numbers can be divided into recurring shapes. Moving on. Wow, how does that relate with our hidden layer? Hidden layer में we are hoping के ट्रेन करे बाद ये पैटर्न्स को डिटेक्ट करना शुरू कर देता उन्हें. अपन उसको नहीं बोलते कि भाई तो ये वाला न्यूरॉन ऊपर वाला पैटर्न, ऊपर वाला लूप डिटेक्ट करो, ये वाला न्यूरॉन नीचे वाला लूप डिटेक्ट करो. अपन बोलते नहीं, वी आर होपिंग के खुद से सीख जाता उन्हें टू डिटेक्ट ऑल दीज शेप्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. फॉर एग्जाम्पल ये टॉप वाला न्यूरॉन माइट डिटेक्ट ऊपर वाला लूप. एंड व्हाट डज दैट मीन डिटेक्टिंग? दैट मीन्स कि जब भी इनपुट में ऊपर वाला लूप है, फॉर एग्जांपल 9 में है यहाँ पे, कैसा तो भी करके ये जो भी वेट्स जो भी न्यूरॉन्स है एक्टिवेट होके ऊपर वाला ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है ऊपर वाले लूप का वाइट कलर हो जाना, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाना. दैट इज आइडियल केस, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ये वाला न्यूरॉन ये डिटेक्ट करता. Again, we have more examples. नीचे वाला second neuron might detect नीचे वाला loop, third neuron might detect लंबी वाली line, fourth neuron might detect some other shape, dot dot dot. We have some number of shapes over here. And moving on from this, another concept is as I told, we are hoping के perfect shapes detect होना बोल के, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपन उसको बोल रहे तो नहीं कि भाई आप सिर्फ लूप डिटेक्ट करो, लंबी लाइन डिटेक्ट करो. कुछ भी कर लेता उन्हें, जैसा उसको सही दिखा वैसा करता, बेस्ड ऑन अपना जो सेटिंग्स क्या रखे अपन. फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाय दिस, के भाई सिर्फ शेप्स नहीं डिटेक्ट करता, इट माइट डिटेक्ट एजेस, सिंपल एज दैट. सर्कल में इंस्टेड ऑफ डिटेक्टिंग इट एज अ सिंगल लूप, इट माइट डिटेक्ट कि हाँ भाई यहाँ पर एक लाइन दिख रही मेरे को, यहाँ पर एक लाइन दिख रही, यहाँ दिख रही, यहाँ दिख रही, यहाँ दिख रही. As you can see over here, 1 2 3 4 5 things it has divided it into. Line 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 line. Edges में डिवाइड कर रहा. Similarly for 1, ये ऑब्वियसली एक सिंगल लाइन है, बट इट माइट नॉट थिंक दैट वे. उन्होंने सोच रहा कि भाई यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है. उसका एक ही टास्क है कॉमन पैटर्न्स को ढूंढना. एंड वी वोंट बी श्योर पूरा ट्रेनिंग हुए बाद ही ये पूरे आउटपुट्स आते कि भाई क्या डिटेक्ट कर रहा उन्हें. So that's the concept. It can detect shapes. It might detect shapes or it might detect edges. That's the concept of अपना hidden layer. And this is the summary of what we have done just now. Pixels में divide pixels जो है so neuron में represent कर रहे अपन grayscale value से, and it is detecting shapes, edges, and at end of the day digits detect कर रहा हूँ. I just heard a mic is on. Does anyone have any doubts? हाँ सर. ओके, तो मेरा ये डाउट था, तो एजेस भी देखता है और शेप्स भी देखता है, तो दोनों मिला के देखता है या लाइक सेपरेटली देखता है, डिपेंडिंग कौन सा बेटर है? That's the point. अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते बिफोर ट्रेनिंग. द मशीन लर्निंग पार्ट जो मैं बोला, ट्रेनिंग के टाइम उन्हें खुद से बना लेता कि भाई ठीक है मैं ये शेप डिटेक्ट करूंगा, मैं ये एज डिटेक्ट करूंगा, इट इज़ रैंडम. मगर अपन सिर्फ उसको ये बोल रहे कि भाई तू रिलायबली मेरे को नंबर्स डिटेक्ट करके दे. अब वो अंदर उन्हें कैसा कर लेगा, इट्स अप टू हिम. न्यूरल नेटवर्क के ऊपर है वो. बट मोस्ट कॉमन थिंग्स आर एजेस एंड शेप्स डिटेक्ट करता हूँ. सिंपल एज दैट. क्लियर? या वेयर एक एप्लीकेशन देखेंगे अपन इसका है. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर कहाँ पे यूज होता.
इमेज है लायन की ऑब्वियसली यहाँ पे, उसको अपन लेट्स से डिवाइडेड अप इनटू एजेस, एक फिल्टर लगाओ जिससे एजेस मालूम हो रहे हैं, यहाँ एक एज है, यहाँ एक एज है, ये इमेज आ जा रही है अपने को, एजेस 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 क्या आ रही। एंड ये न्यूरल नेटवर्क लेट्स से इट्स ट्रेन्ड ऑन जू एनिमल्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स पे ट्रेंड है, एंड इट डिटेक्ट्स के भाई ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा लूप दिख रहा मेरे को, ओके आए होंगे यहाँ पे, और एक लूप दिख रहा आए होंगे यहाँ पे, एक बड़ी सी नाक दिख रही है एंड सम स्नोट टाइप दिख रहा, ओके सम बड़ा एनिमल है, एंड ऑफ द डे ही इज सेइंग कि लायन है। दैट्स हाउ अपना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स वर्क होते, द वंस दैट सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगे हुए रहते, डिटेक्ट इफ वी हैव हेलमेट्स और नॉट, एंड मास्क डिटेक्ट करने के एल्गोरिथम्स रहते हैं, ऑल ऑफ दीज वर्क ऑन दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, ऑडियो अपना इमेज ही ज़रूरी नहीं है, ऑडियो ऑल्सो इट कैन रिकग्नाइज दैट यूजिंग द सेम डिवाइड एंड रूल का रूल। रॉ ऑडियो को ने फॉर एग्जांपल कुछ रिकग्निशन बोल के वर्ड बोले आप, ओके बुरा देख लिया उन्हें, एंड देन ही डिवाइड्स इट अप इनटू सिलेबल्स, recognition, that's how it understands कि okay you have said recognition, that's the usage in our Google Assistant, in our Alexa, in our Siri, etc. उसका डिटेल इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिंप्लीफाई करा मैं, बट दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस। एक क्वेश्चन बड़ा आता कि भाई ठीक है शेप्स डिटेक्ट हो रहे, एजेस डिटेक्ट हो रहे, आई सेड न्यूरॉन कर लेता, बट कैसा करता, हाउ डज इट एक्चुअली डू दैट। आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा आई होप, मैथमेटिक्स में ही करता हूँ, मैथमेटिक्स इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ दीज न्यूरल नेटवर्क्स। That more brings us over to the next topic of the day, weights. Weights is the mathematical portion of neural networks, and it is how the actual detection happens. As I said, her node is connected to the next node. Every node यहाँ पे suppose और nodes रहते, तो इन्हें इसको connected है, इसको connected है, इसको connected है, डॉट डॉट डॉट। अब ये कनेक्शन का मतलब क्या है, मैं बोल तो दिया कि भाई कनेक्शन है, बट व्हाट डज दैट मीन, उन लोग हाथ पकड़ के रखते, क्या मसला है उन लोगों का। इट मीन्स कि देर इज अ वेट एसोसिएटेड विद दैट कनेक्शन, ईच कनेक्शन हैज अ वेट एसोसिएटेड विद इट, ये कनेक्शन डॉट 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 में समथिंग कॉल्ड वेट। व्हाट इज वेट, अगेन जस्ट लाइक न्यूरॉन, इट्स नथिंग बट अ नंबर, नंबर है यहाँ पे, नंबर है यहाँ पे, इट्स नथिंग बट अ नंबर। अब वो नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव लाइक द फर्स्ट फ्यू नंबर्स जो यहाँ पे है अपन अपने पास, and it can be negative like this one, this one, this one, and it can be more than one। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में restricted नहीं है वो, it can be more than one, 1 2 3 4 100 1000 whatever। Now what does that represent, weight का मतलब क्या है, नंबर है समझ गया, it means the strength of the connection। भाई ये कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये कनेक्शन को मैं भाव दूं कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन दैट दिस न्यूरॉन आस्क्स, कि भाई ये फर्स्ट न्यूरॉन प्रीवियस लेयर का जो कनेक्शन है कितना भाव दूं मैं उसको। अगर इफ इट्स हाई मैग्नीट्यूड वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल द थर्ड वन इज 3.64, तो उसकी थिक दिख रहा, देखो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज अ बिट थिन, सेकंड वन इज अ बिट थिन, थर्ड कनेक्शन इज अ बिट स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा थिक है वो। दैट मीन्स कि इन्हें थोड़ा भी चेंज हो गया तो इन्हें ज़्यादा चेंज होता, ठीक है, इन्हें थोड़ा भी चेंज हो गया ज़्यादा वेट वाला बंदा, तो अपना मेन न्यूरॉन एकदम चेंज हो जाता। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि कितना सॉर्ट ऑफ भापती हूँ मैं अपने ईच एंड एवरी न्यूरॉन को। Next thing is लाल लाइन अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, negative weights as you might have guessed is represented by red lines। इसका मतलब है obviously as you can guess inverse relationship है, इन्हें बढ़ गया तो इन्हें कम हो जाता, इन्हें बढ़ गया तो इन्हें कम हो जाता, बिकॉज इन्हें रेड है, नेगेटिव वेट है। एंड अगेन थिकनेस का भी सेम कॉन्सेप्ट है उसमें, इफ इट्स थिकर एंड रेड, इन्हें थोड़ा भी बढ़ गया तो इन्हें बहुत कम हो जाता, ठीक है। That's simply what weight is, simple चीज़ें, numbers and strength of the connection represent करता उन्हें। Yeah, let's have a raise of hands again, जो समझे, and mic open for doubts। weights concept कौन कौन समझ गए, just raise your hands। 9 people, 11 people, 12 people, okay, 15, 16,
17. Yeah, okay, that's a good number, I think. Any doubts in weights? Anyone has any doubts? You can open your mic, type in chat. What about multiple digit numbers? When is this? Hey, Saad Riyan, can you open up your mic? थोड़ा doubt थोड़ा पुराना है आपका. I think I missed it. Yeah, like when you're talking about shapes and all, right? Right. Yeah, but if like the numbers are multiple 89 or something, they both have a cylindrical shape. How would it detect that one? 8 and 9 both have a cylindrical shape. Okay. Yeah. Luckily we have उसका example over here. 8 में उन्हें बोलता कि भाई I mean 9 में उन्हें बोलता कि ऊपर लूप है, ठीक है. 8 में भी बोलता कि ऊपर लूप है. अब उन्हें differentiate कैसा करेंगे? That's why we have another shape in these numbers. 9 में नीचे एक line रहती, 8 में नीचे एक loop रहता. 9 में line है, 8 में loop है. हो गया. That's how it differentiates. Clear? Yeah. Okay. Let's take a break for 2 minutes. I gotta go open the door. Yeah, let's have a break for 2 minutes. I'll be back. Do you have any doubts till now? You can ask because Hisham is Rashid Agil. Chalo, just Okay. Yeah, I'm back. Any more doubts? We just cleared it out. If you have any more doubts, just raise your hand. We have a few hands raised already. Are these doubts or did you all forget to unraise? Mudassir, Sufyan, Abdul Shafi, Misbah. And Aman. I guess these are, you forgot to unraise your hands. Anyways, that means we have cleared everyone's doubts. We'll be moving on. Weights का concept कर रहे थे अपन. Everyone get back. Okay. Yeah. Again, weights positive रहते, negative रहते, and magnitude रहता उन लोगों का. Simple as that. अब वेट्स का अपन एप्लीकेशन देखेंगे. एक एग्जांपल है यहाँ पे, टास्क दिया है समझो आपको कि भाई आई शेप्स का कॉन्सेप्ट पढ़े अपन, उसमें
ऊपर यहाँ स्पेसिफिक रेक्टेंगल ऐसा वाला ढूंढो आप and adjust the weights of this particular neural network such that ये वाला रेक्टेंगल आप ढूंढ लेना। अपन अभी डिस्कस करें कि वेट्स वगैरह से एक्चुअल कैसा ढूंढ रहा उन्हें एप्लीकेशन उसका वेट्स वगैरह से रहता। नाउ हाउ डू यू एडजस्ट द वेट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर कनेक्शंस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सच दैट ये शेप अच्छे से डिटेक्ट होना। लेट्स गेट इनटू दैट। आई वुड आस्क यू टू गिव अ एग्जांपल बट लाइव सेशन में सही रहता हो। मूविंग ऑन। ओके, लेट्स ट्राई सेटिंग रैंडमली। ठीक है, मैं रैंडमली वेट्स जो अपने प्रीवियस एग्जांपल में था जब बता रहा था मैं रैंडमली सेट कर रही है डॉट 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 डॉट। इसका मतलब देखेंगे अपन कि भाई इसको रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट यू अंडरस्टैंड बेटर कि इसका मतलब क्या है। ये रहा अपना जो वेट सेट करे अपन रैंडमली, ये वाला। हाउ अबाउट वी represent them in the same 28 by 28 grid that we had before। यहाँ पे कर लिया, ठीक है। What does this mean? यहाँ पे blue है, यहाँ पे red है and all. First of all, you must have understood by now कि it's these connections. First वाला connection is going in first वाला pixel. I'll just move a bit of the lines. Second वाला connection is going in the second वाला pixel यहाँ पर. And dot 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 all 784 weights are connected or represented as pixels in this image। अब इसका मतलब क्या है, जहां पर भी ब्लू है अगर वहां पर वाइट कलर की लाइन आ गई, लेट मी चेंज माय कलर टू वाइट। जहां पर भी ब्लू है वहां पर वाइट कलर की लाइन आ गई तो अच्छे से उन्हें बोलता कि ठीक है एक्टिवेट हो जाओ बोल के बोलता। किसको बोलता? ये वाले न्यूरॉन को। अपना टास्क ही वो है कि अपन ये वाला डिटेक्ट करो। तो एनी अगेन आई एक्सप्लेन मोर। यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आ गया तो उन्हें बोलता नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम डीएक्टिवेट हो जाओ बोलता। वही यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वाइट आ गई लाइन, जिक 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 ऐसा कुछ तो भी आ गया तो उन्हें बोलता कि ठीक है यहाँ पे ब्लू में आ गया पिक्सल्स, उसको बढ़ाओ, तुम्हारे मेन न्यूरॉन को बढ़ाओ और बढ़ाओ। दैट्स द क्या बोलते प्रैक्टिकल एक्चुअली क्या हो रहा वेट्स का मतलब वो है। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ वुड यू एडजस्ट दिस दीज वेट्स सच दैट अपना जो रेक्टेंगल शेप डिटेक्ट करने का टास्क है वो कंप्लीट होता। आई वांट टू डिटेक्ट दिस रेक्टेंगल, हाउ डू आई एडजस्ट दीज वेट्स सच दैट ये रेक्टेंगल ही डिटेक्ट होना एंड यहाँ पर का यहाँ पर का यहाँ पर का शेप डिटेक्ट नहीं होना। Anyone, raise your hand, open your mic, give the answer. Okay, I'm gonna start asking people. Abdul Mughis, Abdullah Sheikh, Dania Khan, Ammar, any of you, can you tell me the answer to this? Open your mic actually. If you can't tell, open and say I don't know. No, I don't know. Okay, did you understand the question? Can you repeat the question? Okay, I'll repeat the question. Question is, how do you adjust these weights? Weight number 1, weight number 2, weight number 3, dot dot dot, such that अपना जो task है shape detect करने का, that is correctly performed. वेट्स को यहाँ पर ब्लू रखूँ मैं, यहाँ पर ब्लू रखूँ, यहाँ पर ब्लू रखूँ, यहाँ पर ब्लू So रखूँ, कहाँ पर basically ब्लू रखूँ? जो बीच व्हाइट का पार्ट है रहना वो चाहिए, ब्लू रहना। उसको ब्लू रहना, White बाकी part है, who said that? White part है blue रहना? मुगीस और Mughis, उसके right? अतराफ में रेड रहना। Okay, यहाँ पर मैं blue डाल दिया। Imagine, okay, wait, you know what? Let's get the blue thing. This is blue, I think it's blue. या यहाँ पर ब्लू लियो बोल रहे आप एंड और उसके उसके अतराफ बाउंड्री रेड लेना। बाउंड्रीज पे रेड लेना, समथिंग लाइक दिस। Okay, very nice. I don't know if you saw the next slide or you were listening very nicely, but that is actually the correct answer. अपना offline session रहा तो I would ask for a round of applause, but anyways, congrats for that. This is the correct answer. उसका जहाँ पर अपने को rectangle होना वहाँ पर blue and अतराफ में red, as Mohit said. What does this do again? Maurice, can you tell me why you decided to put red edges across it?
ब्लू के अतराफ में? क्योंकि अगर वो रेड एजेस नहीं रखे तो इन्फिनिट मतलब पूरा अगर अपन पूरा भी वाइट रखे तो वो सेम डिटेक्ट होता मतलब. Okay. Were you present in the offline session, Muis? Yes. Okay, yeah, I figured. But yeah, Muis is right. अपन यहाँ पर रेड डालने से क्या हो रहा? For example, I'll just explain by removing the red. अब यहाँ रेड नहीं है समझो. तो राइट में, where's my big pen? राइट में यहाँ पर आ गया, ठीक है, उन्हें ओके एक्टिवेट कर लो बोल के बोलता. बट यहाँ पर भी आ गया तो भी ओके एक्टिवेट कर लो बोलता. यहाँ पर भी आ गया तो भी ओके एक्टिवेट कर लो बोलता. दैट मीन्स एक बॉर्डर बना दो आप यहाँ पे रेड कलर का, सच दैट ये इतना आया तो ओके, और थोड़ा सा ऊपर आते कि नो बोल देता उन्हें, यहाँ जाते कि नो बोल देता उन्हें. यू कैन पुट अ रेड बॉर्डर ओवर हियर टू इफ यू वांट, पूरे तरीके से बाउंड करने, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. Let's have a raise of hands for everyone who understood this example and how we solved the rectangle को detect करने का problem. Raise of hands. Okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 people. Okay, very nice. Anyone has any doubts? Open your mic. Right, guess we have no doubts then. That means you should be able to answer this question. ये वाले particular case में tell me, it's a pretty self-explanatory question. जो अभी अपन बनाए red blue का border, उसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन अपना जो मेन न्यूरॉन है वाइट कलर का, हाउ डू आई गेट दिस, या ये जो न्यूरॉन है अपना पूरों से कनेक्टेड है, सेम वेट्स, ये वेट्स है उसके, ठीक है. एंड ये जो इस आपके ऑप्शंस है, इससे ज़्यादा एक्टिवेट होता कि इससे होता कि इससे होता कि इससे होता. गिव मी द ऑर्डर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, समथिंग लाइक दैट. टाइप इट अप इन चार्ट. Think about it, take your time, think about it, and type it up in chart. Answer in the form of A greater than B greater than C greater than D, something like that. Any order mein. Give the entire thing, not just the most activated thing. Okay, any other answers? एक ही आया अभी तक. Answer the question, guys. If you didn't understand the question, just ask. Okay, we have a few answers. I'm gonna give you about 15 more seconds. Just put any answer you think is right. I'm getting a call. Yeah, just keep putting answers. 1 second. Right, I've been told to hurry up, so let's try moving on. Correct answer for this question is B greater than D greater than A greater than C. Again, B greater than D greater than A greater than C. Let's see who got it right then. Abdullah Sheikh and
PDAC. PDAC. I think Abdullah Sheikh is the only person who got it right. Congrats then. Yeah, Abdullah Sheikh is the only person who got it right. Most of you got the first part right कि भाई ठीक है, B is the most activation लाने वाला thing. Actually, Abdullah Sheikh, can you explain your reasoning जल्दी से? So basically, since we have to get like white square, having B first would mean we have a more close representation of the white box. Right. Then D would be the second closest one. Then having Right. A would basically mean have a background and something like that. C Mhm. would basically mean that you are inverting the whole thing, so you wouldn't get the white box. Instead, you would get something else. Right. So these are- Absolutely right. Yeah, you can close your mic for noise, Zara. I'll re-explain. What he said is absolutely right, but in more simpler terms, अपना जो अपन बनाए, that was supposed to detect ये वाला sort of rectangle, ठीक है? This one, this one, this one, and this one. उन्हें चाहता कि इसके बीच में रहना, इसके तरफ नहीं रहना, सिंपल एज दैट. सो ऑब्वियसली दिस वन विंस, बी इज द हाईएस्ट वन. डी कहीं कुछ इतना कि इसके अंदर तो है, खुश हो जा रहा उन्हें, ठीक है बोल के. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है बोल के थोड़ा सा गुस्सा आ रहा उसको कि भाई यहाँ पे कहीं को डाले तुम रेड में वाइट पिक्सल्स बोल के थोड़ा सा कट हो जाता, माइनस पॉइंट्स आते. मगर ये बीच वाला तो बड़ा है तो पॉजिटिव पॉइंट्स उसके अभी भी है. ये सेकंड हो गया. ए में जो है सो कुछ भी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है, 0 पॉइंट्स हो गया इन्हें. और सी में जो है सो यहाँ तो नहीं है 0 पॉइंट्स, मर जा नहीं रहना है वहाँ पे है, तो कुछ 0 में से भी और कम, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गया. ठीक है, सब नेगेटिव एक्टिवेशन आता है इसमें. यहाँ पर 0 एक्टिवेशन आता, यहाँ पर लिटिल बिट पॉजिटिव आता, यहाँ पे फुल्ली पॉजिटिव आता. दैट्स द एक्सप्लेनेशन. I would ask if you all understood, but we don't have time. We are moving on. Machine learning में cost function. Yeah, as I said शुरू में, one of the topics we'll be discussing is cost function and value. So let's get into that. Also keep in mind this is for machine learning. अपना neural networks जितना करने वाले थे हो गया अपना. ठीक है, cost function. What is cost function? What is machine learning? First of all, machine learning is the adjustment of these weights. Simple as that. अब आप हाथ से तो जैसा अपन अभी करें एडजस्ट नहीं कर सकते weights for everything. As I told, वो shapes खुद ही से बनने वाले हैं. That is where machine learning comes in. उन्हें खुद से adjust करता weights. उसके अंदर एक concept है cost function कि भाई आप कितना अच्छा या गंदा आ रहा आंसर. That is what cost function means. I'll tell you what that is. ये आउटपुट लेयर है फर्स्ट ऑफ ऑल. ये जो यहाँ पर ये एक है, ये एक है. दीज आर बोथ आउटपुट लेयर्स के एग्जांपल्स. यहाँ पर ऐसा आया समझो आपको कि भाई ये अगेन आउटपुट लेयर मीन्स क्या, आंसर क्या है, आंसर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 है. उसमें आपको इन्हें ऐसा आंसर दिया कि भाई 0 थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, 1 थोड़ा सा सोच रहा हूँ, 2 सोच रहा हूँ, 3 शायद ऑलमोस्ट 4, ऐसा बेकार आंसर है वो, ट्रैश आंसर है वो. दिस इज व्हाट यू गॉट. इमेजिन दिस इज द आउटपुट यू गॉट एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट, करेक्ट आउटपुट. दोनों का डिफरेंस निकालो. इस 0 इसका वैल्यू एक्टिवेशन वैल्यू माइनस इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू. यहाँ पे करो थोड़ा मैथमेटिक्स. इसमें 0.43 आया यहाँ पे, एंड यहाँ पे 0 आया, इंडिकेटेड बाय द ब्राइटनेस. अगेन ब्राइटनेस कुछ भी नहीं है, 0 है. तो दोनों का डिफरेंस निकालो, स्क्वायर इट अप. सेकंड वाले में भी सेम करो, स्क्वायर इट अप, स्क्वायर इट अप, स्क्वायर इट अप, स्क्वायर इट अप, स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ, एंड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द करंट न्यूरल नेटवर्क की कंडीशन कैसी है. कॉस्ट बढ़ के है मतलब बेकार न्यूरल नेटवर्क है फिल वक्त, और आपका कॉस्ट बढ़ के आता है इन दैट सिचुएशन. एंड आपका ट्रेनिंग के टाइम ये गोल रहता है कि कॉस्ट को कम से कम करना है. आई थिंक दैट्स enough for cost for now. Again, we don't have time to ask you if you understood or not. Moving on, instead we'll do a question जल्दी से. Imagine यहाँ पे अपना नेटवर्क बना हुआ है, अच्छा, एंड अच्छा नहीं, नेटवर्क बना हुआ है, उसको 4 इनपुट इमेज दे दिया अपन, and these are the various outputs we are getting in neural network. A में ये आउटपुट आया, न्यूरल नेटवर्क B में ये आउटपुट आया, न्यूरल नेटवर्क C में ये आउटपुट आया, न्यूरल नेटवर्क D में ये आउटपुट आया. Which rank these up, किसका आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा.
सो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बाय द वे कॉस्ट इज़ अ बैड थिंग। तो कौन सा सबसे गंदा न्यूरल नेटवर्क है उस वैसा मेरे को बोलो आप, सबसे गंदा एंड देन थोड़ा कम गंदा, थोड़ा कम गंदा, थोड़ा कम गंदा, ऑर्डर दियो जल्दी से। सेम फॉर्म, A greater than B greater than C greater than D, something like that. Think about it. A greater than B greater than C greater than D के फॉर्म में देना है। Repeating the question for those who didn't understand. Cost का ऑर्डर दियो मेरे को। What is the order of cost for these neural networks? Neural network A जो ये आउटपुट दे रहा उसका कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर न्यूरल नेटवर्क बी जो ये आउटपुट दे रहा उसका कॉस्ट ज़्यादा आता, न्यूरल नेटवर्क सी जो ये आउटपुट दे रहा उसका कॉस्ट ज़्यादा आता, एक्सेट्रा। I will write the answer down for myself. You have about 30 seconds for this. Again, cost क्या order देना है आपको? So the worst neural network will go first. Right, again running out of time, let's move on. आप क्या answers check करते हो मैं after telling you the answer. D, C, A, B. D greater than C greater than A greater than B. Yeah, I'm seeing your doubt, Misbah. Can you briefly say again what is cost? I will be doing that once we are done with this quiz. D, C, A, B. Actually, just pay attention, Misbah. यहाँ पे फिर से explain कर दूँ मैं. D, C, A, B कई को है. First of all, let's see who got it right. Ammar is my pick. D, C, A, B. Congrats, Dania Khan. D, C, A, B. Congrats, D, C, A, B. Ruhi. D, C, A, B. Nuha Nasser. D, C, A, B. Aman. Congrats guys, you understood the concept. Quickly I'll explain. D में क्या है, worst case scenario. इन्हें जिधर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहना था, जीरो फुल ब्राइट हो गया नो, यहाँ पे भी ब्लैक रहना था फुल ब्राइट हो गया नो, यहाँ भी ब्लैक रहना था फुल ब्राइट हो गया नो, यहाँ भी ब्लैक रहना था फुल ब्राइट हो गया, यहाँ पे व्हाइट रहना था, 4 दिख रहा ना यहाँ पे, यहाँ पर उन्होंने व्हाइट रहना था बट उन्होंने ब्लैक हो गए। अगेन वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि जहाँ पर व्हाइट रहना वहाँ ब्लैक है, वहाँ जहाँ ब्लैक रहना वहाँ व्हाइट है, कॉस्ट बढ़ जाता अपना। कॉस्ट इज द कितना रॉन्ग आंसर दिया उन्हें उसका मेजरमेंट है वो, ठीक है। सी में यहाँ पे स्लाइटली रॉन्ग आंसर है, लाइक मैं स्लाइटली रॉन्ग का बोल रहा हूँ मैं, पूरा वाइट नहीं है थोड़ा ग्रे है उन्हें। तो जब आप वैल्यू उसकी डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे छोटा सा वैल्यू आती विच विल बी एडेड टू द कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है, यहाँ पे उन्हें गंदा दे रहा, 4 में थोड़ा अच्छा दे रहा तो थोड़ा यहाँ पे प्लस होता, ये पूरे माइनस होते, एज इन गंदी बात है वो, इट एड्स टू द कॉस्ट फंक्शन एंड दीज ऑल ऑल्सो एड टू द कॉस्ट फंक्शन। दैट मीन्स के इन्हें अच्छी खासी वैल्यू आपको दे रहा इन फॉर कॉस्ट फंक्शन बढ़ के। एंड देन ए का एक बोले तो ठीक है, ये सही दे दिया उन्हें, सही दे दिया, सही, यहाँ 0 आना था, यहाँ 0 आना था, हमारे यहाँ 4 पे आपको वाइट आना था, नहीं दिया उन्हें, तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस, ओके। एंड लास्टली बी इज द परफेक्ट आंसर, 4 के लिए 4 ही दिया उन्हें और बाकी है कुछ भी नहीं दिया, तो कॉस्ट फंक्शन इसका कितना आता, 0 आता, इसका थोड़ा सा आता, इसका और बढ़ के आता, इसका और बढ़ के आता। दैट्स इट फॉर कॉस्ट फंक्शंस। Moving on to let me see if I have time to do this. बहुत रो रहे यहाँ पे लोग, 1 second. Okay guys, that's it for neural networks and weights and cost function. ReLU we won't be doing now, we will be doing supervised and supervised learning के अंदर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन कि भाई आप ये न्यूरल नेटवर्क करके कर रहे क्या, उससे क्लासिफिकेशन का टास्क रहते और रिग्रेशन के टास्क रहते, इसका मतलब एंड अ बेट मोर डिटेल हिशम कराने वाले हैं आपको। सो विल बी मूविंग ऑन टू हिशम। थैंक यू गाइस।
right. Assalamu alaikum, guys. Am I audible? Yes, you're audible, Hisham. Nice. All right. Sorry for the delay, guys. But we're going to do a project right now so that you can understand what's in use of neural networks. Not this one. Stop sharing. Share screen. Direct screen. Right. So let's start off with a regression, actually. Much more interesting thing. So what is regression exactly? So using neural networks, right, we start predicting values like, how long would it take you to go from point A to point B, or based on your, certain parameters, what could the insurance be for you, or based on other data, how much would be your land value be? So any kind of value you want to predict, a number, certain number, we use regression. So, right, so regression looks something like this. Let me just share this, present this entire thing. Present. All right, so over here you have some data over here: age, km, weight, kitna hai, HP, met, and doors, and all this data over here. It's passed into like one row. All right, we're gonna pass row by row, and then we'll pass this into the neural network. The neural network, like how Rashid explained, starts making its own assumption, its own understanding from this data. Finally, it predicts some price. Some maybe घर का value रह सकता, नहीं तो जमीन का value रह सकता. So that's how regression neural networks work. They kind of take data in and start predicting certain values of any kind, age, not just price, any kind actually. So a typical regression neural network structure kind of looks like this. Let's share this full screen. Right. So first off, there's going to be an input layer, like how Rashid said. So if you're going to do houses, right, pricing of a house, there can be like how many bedrooms there are, how many bathrooms there are, how many car spaces. Then there are the hidden layers. These can be as many as you want actually. The sky is the limit, and minimum is at least one. There should be at least one. Okay, you not have 0 hidden layers. Neurons per hidden layer, right? So over here there are like 1, 2, 3, 4, 5. There's 5 in each hidden layer over here. So those are neurons. So when we are mentioning neurons per hidden layer, we can kind of mention how many do you want. So generally it ranges from 10 to 100, but you can mention anything actually. You can even put 1,000 or 10,000. But as you keep on doing machine learning, you'll understand that there's a certain sweet spot where you get the right number of neurons. Finally, the output layer, we're predicting only just one value, right? So there's going to be only one node outside. This one node will say how much value. That's it. And of course, hidden activation. All right. So Rashid wasn't able to explain really because of time issues, but what it generally means is these nodes, right? What did Rashid say? Neurons. So neurons are numbers, right? So what numbers exactly? So ReLU function like this. ReLU, for example, set those values in the first place. Then there's also logistic or tanh functions also. Loss functions, there's mean square error or mean absolute error, and optimizers. Optimizers, they're like Adam, SGD, stochastic gradient descent. What these do is how the machine learns exactly, how those values are changing at what rate, or it's completely physics concepts actually, or complete maths. But we, as AI engineers, don't really have to go into much depth when we are designing our own neural networks. Usually, Adam is the most popular one. SGD is the second most popular one. So far, this is the theory, right? I'll get back to that. So far until now, any questions on what's regression or anything on that? Any questions? Show of hands. Feel free to ask anything. All right, so moving on. So yeah, let's get into the practical aspect of this whole thing. Let's open a new Google Colab notebook. So open up, right? A new Google Colab notebook. All right. So all right, so we're going to do a project now. So I could have made any kind of project right now. I can predict house prices. I can predict insurance. I can predict, how much would you survive? How much would you live in a certain condition? So those are all boring, right? So how about we do something interesting? We have a custom data set over here right now. And what's the custom data set about? Let me just share it to you. I'll check your WhatsApps actually.
Right. Let's send it right. A zombie survival data set. A hypothetical situation where a zombie outbreak happens in Hyderabad. How long would you particularly survive based on your age, weight, stuff like that? So we're going to do exactly that over here. Have you all got the data set from the WhatsApp? Just raise your hands if you have. Right, you all receive the data sets, right? Just download it, all right, and keep it on your desktop right now. So right now, let me just change my name of this whole thing. Zombie survival. This is interesting. This is like, yeah, who wants to do boring stuff like predicting house prices? I mean, when we are designing this whole thing, the same structure is going to be applied. So later on, when you're going to do actual use cases, it's nothing different actually. You'll understand how to handle data and how to create a neural network even for that. So right now, here's my data set over here. I'm going to do a simple move. I'm going to just drag it and drop it over here. All right, yeah. Under files, all right, under files. And right now it's loading up. And there you go. There's my zombie survival data set. So, all right. First, we're going to import our own libraries, whatever we want. I mean, I would definitely want pandas. My bad. As PD. I want to import NumPy as NP. NumPy, what it does is just Python lists, right? All it does is kind of process it differently, much better. It processes using C language. Other than that, it's nothing different. Import TensorFlow, our main crown jewel itself, and of course, we need these certain stuff which I'll be explaining. Just copy paste it and explain it as we're using them. All right, from small. Don't worry, I'll paste this code snippets in the chat as well. So in case you don't keep up, just copy paste the code. As long as you understand, that's the most significant part of this whole thing. Sorry, my bad. Metrics, import mean, squared, error. Don't worry about that. Don't worry about this. I'll explain each of these, what we're importing and why are we importing in the first place. Dot compose. Just code along with me. So not pre-processing, import maxscaler encode. Right. So here we are importing every all the libraries which we possibly need. Let's share that with you. Are we extending the meet? Is this the project? Yes, this is the project over here. There you go. Just import all of these. Let's copy paste this. Right. So moving on. So we have our file over here, right? Let me just click these 3 dots over here. These 3 dots. And just say copy path. I'm going to need that right now. For what exactly? I'm going to create a data frame. df equals to pd. What's pd? Pandas. Pandas as pd, right? Dot read csv. Why read csv? Because my file is in csv format. So read csv, and within quotes, I'm going to mention my file path. Copy paste. That's it. I copy pasted the file path over here. Content / zombie survival data.csv. And I just want to see how it looks like on the top. All right, df.head. Okay, wait, my bad. I have to run all of them. Right, so it's importing all of them, and there you go. This is how the top looks like. Are you all right here? So what are the columns exactly? How much is my age? Okay, what's the gender? Male, female, and location. Mehdipatnam hai, Himayatnagar hai, Dilsukh Nagar hai. How many family members do you live with? BMI, like how healthy you are overall. Do you have any medical conditions?
how would you rate yourself on a scale of 1 to 10 cooking wise? And can you drive a car? Can you drive a bike? And finally, how long can you survive with such conditions? So yeah, these are the columns. Don't take it personally, all right? So it's just a completely dummy data set filled with 10,000 records or something. Right. So all right. So one thing you need to understand here, right? So first thing I'm going to talk about scaling values. Any doubts until here right now? Any doubts? I'm just going to take any doubts right now. Yeah, let me just copy this code also so that you guys can just right. You can check. You can copy this code too. Right. All right. So no doubts. I'm taking this. So all right. So first let's look at the values. Age is 64, 20, 30. So basically, age is in the numbers of 0 to 100, right? But what about cooking skill? For example, over here, cooking skill is from 1 to 10. Family members can be like 1 to 5, maybe some rare cases 1 to 8, something like that. BMI has float values 32.2, 34.6, such values. So these values over here, these within each of these columns, they're not the same. They're not within the same range. So the neural network, right, might have a hard time understanding what's the most important column over here. So based looking at this, you'll see, bro, age has the highest values. Maybe the age parameter is what's going to determine how long we survive. None of these actually. So it's necessary that you kind of standardize, you start normalize the values. You bring them all on the same level. So how do we do that? We use this particular formula, scaling. This is the formulas, right? So one particular value we find x min. What's x min? X min in this entire column of age, and then there's x max. We use this formula. We kind of set each of these columns with numerical values between the 0 and 1. It can be anything 0, 0.1, 0.5, 0.7. As long as all of them are between 0 and 1, we need that. So, anyone have any questions on scaling values? Why are we doing that exactly? All right, moving forward. All right, so yeah, this is our column. All right, so that's scaling. One more thing is this name. What did I say yesterday? That neural network can only understand numbers, nothing else. But even location, these names, they also have some value, right? This gender and heart disease, these are words, but they're not numbers. But that doesn't mean they don't have any value. So how are we going to address that situation? What we can do is kind of encode them into other numbers. This is called one hot encoding. What we do is, imagine there's food name, right? Apple, chicken, broccoli. What we can do is split it up. Apple, chicken column ऐसा खुद के column बना सकते हैं each. फिर apple में 1 रख सकते हैं या बाकी इसमें 0 0 रख सकते हैं apple. चिकन रहा तो क्या करेंगे? Apple को यहाँ 0 रख देंगे, broccoli को यहाँ 0 रख देंगे, chicken को 1 रख देंगे यहाँ पर. And फिर broccoli रहा तो क्या करेंगे? Apple को 0, chicken को 0, broccoli को 1. So this is how we are converting all this names into encoding over here. We're making them into columns, their own columns, and then we're adding numbers. So that the neural network will understand, okay, यहाँ 1 रहा, यहाँ 0 रहा, मतलब it's referring to some item called apple. All right, so that's one hot encoding. Any questions in one hot encoding? Feel free to ask anything, all right? One hot encoding, any doubts? If you want me to explain, I'm ready to do that. All right, moving on. So, all right, so our data set over here, right? It's kind of filled with that. It's filled with strings, it's filled with names, it's filled with not scaled values. So what we can do is make a column transform. It's going to transform these values. For that, we're gonna name a variable CT, and we're gonna use make column transformer. All right. And this function, where did we get this function from? Over here. We imported that right now from sklearn.compose. Don't worry, you don't have to exactly rectify all of this. The documentation mein rehta. You can always check documentation. It's not a test when you're coding. It's always open to that.
So over here we pass in two parameters. One is the min max skill. Min max skill. All right. Here we're gonna change the values. Which column? We also have to mention which columns के लिए हम लोग करने वाले हैं. तो कौन से के लिए करने वाले? एज के, एज में नंबर्स है, राइट? एज है और क्या है? BMI है. BMI लो देखो. And yeah, it's case sensitive, so use the exact spelling and exact uppercase, lowercase. और क्या है? Family members भी है, right? There's no need to go in a particular order also. Family members, right? Another one is cooking skill, right? Skill, right? We are not going to take survival time days because that's what we're going to predict. So the neural network does not have to consider that at all. That's what it's trying to predict in the first place. Right now, until now, we are doing all of this encoding because it needs to understand whatever data it's accepting, but it's not accepting the output itself. No, not yet, actually, at least. Now that's the min-max skill, right? Now we have to pass in the one hot encoder. So one hot encoder, right? One hot encoder, and then let's pass in a certain function within that. Handle unknown equals to ignore. That means if some kind of like if you make some error, right, just ignore it. It's part of the whole thing. It's not a big issue actually, right? And then here we're going to mention the same thing. कौन से डालने हम लोग को. I think we're running out of time, so I'll just copy paste the whole thing. यहाँ पर है code में बस, right? Gender, gender है, location है, medical conditions है, can drive car, can drive bike, right? So yeah, there's our column transformer over here. Let me just bring this over down. Right, you can see that better. Right, so that's a column transform already. So now all we have to do is split the data. What are we going to split it into? The training data and the final output. So let's name a variable called x. All right, we're going to use df.drop as a mass subset. We're going to drop a few columns. Which column exactly? Survival time days, because that's what we don't need actually when you're training. Survival time days. Axis equals to 1. Axis equals to 1 means eliminate this column along the axis. 1 means along the column side. If I press 0, right, it's going to start looking on from the rows perspective, but we know it from the column side because we need the entire column to be gone. Finally, y equals to df. We want this. Y is the final, the output of the whole thing. We just want it to be survival time days. So yeah, we copy कर लेंगे ये और यहाँ paste. There you go. So let's execute that. All right, seems to work. Let me just share this code with you guys. Right. Any doubts in this so far? What we have done with column transformer is we are going to use this column transformer right now for this whole thing. So let's see x dot head. Let's see how our data looks like now. Right. So that column survival time days is gone now because now we can pass this into the neural network. Not yet. Column transforming करने के बाद. Y dot head भी देखेंगे. There we go. So yeah, y dot head means seeing a few of, so 40400400400, right? That's accurate. So now let's actually apply the column transform. No, wait, let me 1 minute. Column transform. Right. Let's actually kind of transform it, right? So CT, that's the column transformation made. What are we gonna do? Fit. Transform x, right? We are fitting and transforming the same. What is fitting means? Fitting means ये formula है ना भाई? ये formula है, right? We are fitting this formula. Minimum x min क्या है? X max क्या है? X min क्या है? We are fitting that formula. Transform means we're gonna now transform the values using x, using the column transformer. So there you go. We executed that. Let's see how x looks like now.
Let's look how it looks like now. Oh yeah, sorry. We cannot check it anymore now because we are using column transformer, right? And that's an sklearn library. So now it's no longer exactly a pandas data frame, not anymore. Until now it was a pandas data frame. Now it's not anymore, so we cannot exactly see how it looks like now, unfortunately. Right. So any doubts now, because we're going to start building the neural network itself. Okay, no doubts. That's a problem. Should I go on? At least yes or no, speak up or raise your hands. All right, nice. All right, so let's build our whole neural network. So let's set a random seed. tf.random.set seed. Why are we doing this exactly? A set seed? Well, neural network training is completely random, like how Rashid said, it's up to him. And if we leave it to a neural network, right, there are many thousands of ways it can do it. But by setting seed 42, we're kind of telling by ऐसी होना है हम लोग को और किसी तरीके से नको try करो ऐसी होना है हम लोग को, right? So we set the seed. Now we're going to create the model itself, the AI model. What are we going to need? tf.keras. Keras is where we use to create the neural network, and sequential, because for sequence में ना layer by layer sequence में, so we use a function called sequential over here. So we pass this, all right, pass a list actually. There you go. So the first layer we're going to add is tf.keras.layers.dense. So what the layers which we are referring to until now are actually called dense. We pass in any number. So here now we're going to pass a number here right now. Those are neurons. How many neurons we want? Here there are 1, 2, 3, 4, 5. I want to pass 64. Any number actually works. But as you're moving on in your career in machine learning, you'll realize thode neurons, a particular set of neurons works, right? And then we're going to set activation equals to ReLU, which stands for rectified linear unit. That means how the values are going to set for each neuron. And since this is the input layer, right, we kind of need to mention what's the input dimension, what kind of input you can expect. 3, 4, 5, 6, 7 value expect kar raha hai. We should kind of mention that right now itself. Input dim equals to x dot shape. So yeah, right. So it's not capital x dot shape. So x का shape कितना है? इसमें we need to get the columns. How many columns there are? Like how I said, x equals 1. Right? X equals 1 refers to how many columns there are. Basically, x dot shape equal 1. How many columns there are? That's what we need. यहाँ पर इतने columns से इतने columns add करें. So x dot shape हम add करिए, right? This is one layer. This is the input layer right now. Or also tf dot keras dot layers dot dropout भी layer डाल देंगे. All right. So what's a dropout layer? So what happens is sometimes when you're training data, right? Sometimes it may happen that the computer learned it way too good. बस ज़्यादा अच्छा पढ़ लिया, इतना अच्छा पढ़ लिया कि उसको वही image समझ में आता. If you bring some other kind of data, right, it'll be confused. Buttify मार लिया मतलब basically उसके application बोल तो एक भी काम नहीं आता उसको. So sometimes that's called overfitting, and we don't need that to happen. उसको buttify नहीं करना, समझाना है उसको. So dropout means just setting some value over here. Itna come reduce overfitting overall. And tf.keras, let's add another layer once again. Layers dot dense layers add करेंगे चलो. Dense, right? Up here I want 32 neurons. It doesn't see, look, it's not necessary that यहाँ 5 neurons है, यहाँ पर भी 5 रहना जरूरत है, फिर एक और भी 5 रहना जरूरत है. I can even add 1 also here. Who cares? I can also add 1 and anything I can add. But as I said, as you're going on in your career in machine learning, right, you'll realize थोड़े set of values works best. So यहाँ पर activation mention करना है. What's the activation once again? ReLU. Right. Comma, right. And finally, let's create an output layer now. For output layer dot layers, इसको ये भी density चाहिए. Output layer, here we have to pass 1. We have to pass 1 over here.
because एक ही से आंसर आता है कितना प्राइस है. You don't need multiple values, you only need one value. And finally, of course, activation for this won't be ReLU. Activation for the final layer will have to be linear. Linear means it kind of settles at a particular value. ReLU values ranges by a lot. Linear ranges to ranges to a certain value. That's what you need. So yeah, this is how a neural network looks like. We just have to train it. Before we train it, we have to compile it. Model.compile. Any questions until here? Can you show the most recent cell? You mean this one? Oh yeah, I don't think I copy pasted this particular thing. Right. There you go, Abdul Mughis. Right. So now we have to kind of model.compile the whole thing. I'm getting an error when I run ct.fit_transform. ct.fit. What was the error exactly you're getting? Can you just say the last line? I'll just send it. Transformer mixed in dot fixed fit_transform missing one required position in array. One required position. It's so far running for me, right? So ct.fit transform. Can you once show the import side? The import. Yeah, these are my imports. I even shared that code in the thing, right? You're saying it's missing some value, right? So it's not an import error mostly. Check this. This particular line, column transformer. Check this particular thing. Okay. I shared this code also, so just refer back to the code. If it's saying it's missing some value, means you have not included a particular column itself. Okay. Right. So model.compile. So all right. So model.compile. Here's where we mentioned those optimizer. You know that Adam, very popular Adam optimizer. We also mentioned the loss function. What we're gonna say? We need this particular thing, mean squared error. All right. Mean squared error, right? So that's our loss function over here, right? So now we have created the model. We have told the model how to train it. Now we just have to say this is the data which we want to train it on. What we're gonna say pass here? We're gonna pass x. We're gonna pass y. We're gonna pass epochs. So what are epochs exactly? So the whole training process, right? It's not exactly one thing, it's not exactly one time thing. It's a loop. It happens many times. अब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे सोचो तो एक ही बार पढ़ के बस हो जाता, रिवाइज भी करते ना, एक दो बार रिवाइज करके फिर लिखने जाते. So like that, even a model when it's studying, learning data, right? It needs to keep revising, understanding, and finally then it will understand and start predicting. Then it will be finally more accurate. वैसे होता ना, पहली बार पढ़ रहे तो उतना एक्यूरेट नहीं था. हम लोग खुद ही कुछ नहीं मान रहे क्या पढ़ लेके हम लोग. एक दो बार रिवाइज करे बाद हम लोग स्ट्रांग होते हैं, जरा एक्यूरेट होता हमारे खुद के आंसर में. Another thing is batch size. So over here, right, is this entire data set. Check it out. There are 10 per page. There are over 10,000 such data sets, the data over here. So अब एक साथ पूरा पढ़ते बैठ गया ना कंप्यूटर मॉडल, राइट, बहुत देर हो जाता. So what we can tell him to do is at once look at 16 data, then go to the next 16, then go to the next 16. You're basically dividing your 10,000 data into by 16. Another thing is validation split equals to 0.2. So what is validation split exactly? You're going to divide the data by 20% and 80%. All right. So हम लोग एग्जाम समटाइम्स हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, कुछ मॉक एग्जाम भी ले लेते, मॉक टेस्ट लेते हैं, प्री फाइनल ले लेते हैं. So that's you are giving the model a chance to, खुद को टेस्ट करने के लिए चांस देते हैं, right? So इसको भी इसको रन कर लेंगे हम लोग. Now it's gonna start learning now. Now it's just learning process itself. There you go. Look how it's going, right? It's learning and learning. Each epoch, एक बार रिवाइज करते जा रहा है, समझ देखो. And it's very quick also. Yeah, you're not even using a GPU yet. कल graphic card use करते हैं, Colab का computer vision है ना. There it is going on. So let me share the code also. आप लोग कर लो, whoever is working alongside. Right.
So yeah, there you go. It's learning, it's going on 100 epochs. Right, keep going, keep going. What time है? Time नहीं है, 9:44. Yeah, thank you all for your patience. I know it was ज़्यादा time ले लिए. Yesterday there was a small mess up in the time schedule. From tomorrow onwards, it's going to be strictly 7 to 9, 7 to 9:15, something like that. Just bear with me for this one time. I hope you're not being bored, right? You guys are you guys enjoying the session so far? There's hands up whoever's enjoying the session overall. Right. Nice. Cool. Nice. Right. So it's at 72, 73, 74, 75. Right. Keep going. Oh, revise करते जाओ. Or that only that accurate is gonna be. Right. Nice. 86, 87. Until then, let's just add another code already running here. एक और code add करने के लिए. 94, 95, 96, 7, 98, 99, 100. There you go. Our model, it's not yet done. 800. It's still running the code, right? Let me finish up. Model of it. Anyway, that'll keep on work going on and on. Stop. Validation split. All right, there you go. It's done now. Now the model has learned our data, whatever we passed in. Everyone until done. Red Bull घर पे बेच सकते क्या? Sure, Sufyan. Sure. Red Bull पूरा 5 दिन sponsor कर रहा था. Right. So, all right. So what I want you to do is copy these columns over here. You're gonna predict for you now. हम ना model तो बना रहे. Let's predict. Let's start predicting. So yeah, this is the columns over here. Or yeah, these are all the columns over here. We need to mention that. And yeah, here are the kind of locations, medical conditions, and genders. All right, all the possible locations. क्या है location में? बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, मेहदीपट्टनम है, लक्ष्मी पुल, नामपल्ली, टोली चौकी है, मलकपेट, चारमीनार, एबिड्स, सिकंदराबाद, बेगमपेट, गच्चीबोली, हिमायतनगर, दिलसुख नगर. What are the possible medical conditions? None. Hypertension, diabetes, asthma, allergies, heart disease. Genders are male and female, right? So let's create an input. We're gonna pass our own input. So right, it's gonna be a two-dimensional array, all right? Because neural networks, they kind of start this from starting point of a neural network is they expect two-dimensional data starting. It can go 3 dimensions, can go 4 dimensions, but for the starting, it's gonna be 2 dimensional, not 1 dimensional. So right, so columns क्या है मेरे? Age. What's my age? I am 20. All right. And gender क्या है? मेरा gender क्या है? I'm male. Oh yeah. Or male, right? Mention whenever you mention strings, right? We have to mention these double quotes and mention it exactly like this. Yeah, it's entirely case sensitive. You have to be sure about that. What's next? Location. Noida, I live in Malakpet. Malakpet is an option over here, right? Where is it? Malakpet. Yeah, Malakpet. Guys, and if right, sorry, I cannot input all of your locations. If someone is not living in any of these locations, just pick whichever one of these is closest to you. All right. My apologies if I couldn't include your location right now. Right, family members. I live with my mother, mom, and sis. Oh, it's not a sis. Right. My bad. Right. So family members भी हो गया. BMI. Yeah, I can go to this website. Check your BMI. BMI calculator जाओ. आप देखेंगे किधर. What's my BMI? Metric system. My height. My height is 177 centimeters. My weight 72 kilos. Let's see what's my BMI. 23. So my BMI is 23. All right. फिर क्या है? Medical conditions. Alhamdulillah, none है. Or cooking skill. How would I rate myself on a scale of 1 to 10? My own cooking skill. 7-ish. Hello. Can I drive a car? Yes, I can drive a car. Yes, it's case sensitive, all right? So don't just say small y, yes. Yeah, or capital Y, yes, all right?
Can I drive a bike? Yes, right. Yes. So yeah, this is my input data. I'm going to pass my information into the model, right? But how is the whole thing expecting us? So look, the neural network, right? We did a column transforming, right? Column transforming because we change all these values. We cannot pass it directly into the model. Nope. We have to convert it like how you converted the initial data set. All right. So what are we gonna do? We're gonna what did you do first? We use a data frame over here. So let's do that. Let's create a data frame. Let's copy the code over here, right? Input df. Input df1 equals pd. That's from pandas dot data frame. Df is capital. Input. That's my input over there. Columns equals to columns. What's the columns? These are the columns I'm passing in. I'm telling him these are the columns I'm passing my data into. All right. All right. We have our input data frame. What's next? What's next? What's next? फिर क्या करें हम लोग? Oh, हम लोग column transform करें हम लोग. Of course, we did this separating of survival time days, but it's not needed over here because we're not including that. तो हम लोग क्या करें? Column transforming करें इसको. चलो तो वो हम लोग भी कर लेंगे यहाँ पर. वो भी कर लेंगे अब. Input df equals to ct dot transform this time. All right. We are not gonna learn anymore. हम लोग फिर तो करिए formula भर दिया हम लोग और कुछ नहीं कर सकते. We cannot keep changing that. All right. So just ct dot transform is करना था. What are we gonna pass in input df? All right. Now we're gonna make a prediction. Prediction equals to model dot predict model. What's the model which we just trained right now? I'm gonna pass in our input df. All right. Prediction. Let's see. This is how it looks like, right? Name input df is not defined. Name input df is not defined. Oh, sorry. Input df1 here. Right. My bad. अब run करेंगे. There you go. So I can survive 8 days apparently. Oh yeah. By the way, the whole zombie apocalypse in Hyderabad, right? Imagine it. It's like last for 12, 13 days. उसमें से 13 days में से I can survive 8 days. Wow. So I'm not gonna survive the zombie apocalypse. Okay. Awkward silence. Okay. All right. So okay. Here's something I want you guys to do. Let's share this code. Share this in that thing. Right. So now what I want you to do, I'm going to kind of import math over here. And I want to do a math.seal. What I'm going to do, math.seal. And I also want to make it absolute. And this prediction over here. Right. I'm going to take prediction 0. Just copy this whole thing itself. Right. We're running out of time by a lot. So thank you for your patience. Math.seal absolute prediction 0,0, right? Why 0,0? It's a two-dimensional thing. So 0, the first element within the whole thing list, and 0 for to get at 8.3002. And I'm going to do an absolute function on that. Why? Because sometimes the neural network can also consider negative values, even though they cannot live negative days, right? So we need to convert that back into positive values. And into 24, why? Because I need my answer in hours, not days. And finally, math.seal just to get a rounded up value. So let's check this out. 200 hours overall. I can survive 200 hours. Let us share this code snippet with you guys again. Right. So now I can survive 200 hours apparently in like 12, 13 days. 13 days, right. So all of you have done until now so far? Just raise your hands if you have followed along until now. Nice. Others, what about others? Right, good. Simple raise of hands, nice. Right, what about everyone else? The movies, Anya Khan. Right, nice. Okay, so here's something interesting we GDSC planned for you guys. So I can survive 200 hours over here. That's what's written over here, right? Go to this website. पढ़ाई कर रहे तो गुस्सा कर रहा है ना मम्मी वाह भूख लग रही क्या? भूख लग रही मम्मी नहीं गुस्सा करे हो गया शादी हो में गया जाना है हो गया So I go to this website which we are here at GDSC made
our web team has built. All right, so here's something we want you guys to do. Here I'm gonna mention Hisham. Hey, fill in your name over here. Hisham, how many hours could he survive? 200, 2000. I mean, survive 200 hours. Generate an image. Right, there you go. Right, there's an image. Hisham can survive for 200 hours in a zombie apocalypse. This is check a refresh, right? Enter details of the track. That changes math. No, 200. Let's try this again. Sorry, yeah. Hisham can survive 200 for 200 hours in a zombie apocalypse in Hyderabad. Right, we get this image over here. We can download that right now. And download में आ गया इधर. Right. So what I want you guys to do something interesting is you can share this photo after downloading it on Instagram stories or any other social media apps. And if you tag GDSC and share this with your friends, you are gonna get swags and free goodies when you get your certificate, along with the certificate. So yeah, I'm also gonna share this whole notebook for you guys to try. Yeah, what if I survive 0 hours? It's a book try killing solo. So Hisham cannot survive the apocalypse. Cool. I'm hurting my feelings, but sure. Right. So once again, download this thing, check out the image, and share that on your story. Tag GDSC, and get free swags, free goodies along with the certificate. Right. So that's neural network regression. A quick overview. Well, what we did was right. So what we did was what is column transformer, right? First we read the data set itself, CSV file. We did column transforming so that we can adjust certain values, certain numbers and strings. Then we transform the data. We split into X and Y, and then we train the data set. This is our neural network. We created a neural network and trained it on it, and finally we made the prediction. This entire structure is gonna be the same for anything else. If it's predicting insurance value and predicting your जमीन का value कितना है, या तो कितना mileage हो सकता, and then COVID का pandemic कब हो सकता. Same application, you can predict any kind of value. Right. So I also had a classification plan, but we'll do that on another day. All right. So for now, regression. So कैसा दिखा लो आप लोगों को regression project. And yeah, we are done with the session. Almost 1 घंटा देर हुआ, but Right. like your Thank you. enthusiasm, अब तक रुके आप. MashaAllah. Right. Nice. Right. 26 I'm people. signing off. Right. Allah Hafiz. Thank you for your time. बहुत देर हो गई. Meet you tomorrow. अब कल से देर नहीं होंगे इंशाल्लाह, because आज क्विज. अब देखो लोग कम है and और देर हो जाती है. आपको दावत में जाना है बोले ना शफी भाई आप. अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय. अल्हम्दुलिल्लाह रैन. अल्हम्दुलिल्लाह. क्विज लोग भी कम है. क्विज तो रेडी है बट टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम ना नहीं करा रहे. How many of you guys want the quiz? खेलना अब 10 साल में which other thing? भाई क्विज How अटेंड कर many of you guys want the quiz? Just raise your hand if you guys want the quiz. हाँ, किस किस को क्विज होना, रेज योर हैंड्स करो. अगर एक 15 हो गए समझो Majority इतने को में चाहिए से, तो करेंगे. या 15 रेज ऑफ हैंड्स हो गया अपन करेंगे. थोड़े यस नो मिक्सचर ऑफ थॉट्स से. बट हाँ, वो जैसा शाम बोले टैग करो हम लोग को करने का. we have some swags for you. Swags and free कराना है क्विज फिर शाम व्हाट से. करा दो. People want. 27 people. Okay, no worries, करा देंगे फिर. As people are really interested. उल्लार रुकते बोल रहे. Like your enthusiasm guys. 3 घंटे से आप लोग पढ़ रहे फिर भी आप लोग क्विज बोल रहे माशाल्लाह. Keep the energy high. ऐसे करते रहो आप लोग. And I can assure you कि भाई you will be in a totally different place after some time. Like ये इवेंट हो गए बाद आप इतना तैयार रहते कि भाई आप खुद से AI पढ़ सकते. Is my screen visible, Isham? Wait, अभी था किधर? वापस करो. एक मिनट.
विजिबल है ना? हाँ है। चलो बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी करते जाएंगे अपन। बोल। ऑल राइट, आ जाओ। ओके, लिंक। एंड देखो, यही कंपटीशन दिख जाता। देखो कंपटीशन कितना है। अब 3 घंटे की क्लास का जब बारी आई, कितने जने आखिरी तक रुके हुए हैं। अपन समझते कंपटीशन बहुत है, अरे अपन क्या कर सकते हैं। बट देखो कंपटीशन थोड़ों में ही है। उन लोगों से अपन वेट कर लिए तो आप पहुंच जाते जहाँ जाना चाह रहे। राइट। राइट, और कोई आ रहे बोल तो रुक तो, ना तो शुरू कर दे। तुम्हें देर हो रही पहले ही अपने को। कोई आ रहे तो चैट या फिर रेज ऑफ हैंड कुछ करो, या फिर आई स्टार्ट। अब देखेंगे, ये पूरे सीरियस बंदे थे, आखिरी तक रुके। अब आई एम गेसिंग पूरों के मैक्सिमम आंसर सही रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो शुरू करो शाम। शाम कहीं गए क्या? चलो चलो, देर हो जा रही बहुत। What is the neural network? अब्दुल मुगीस, उमर एंड अनम। माशाल्लाह भाई, क्या बात है, सब जने सही बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह। What does a regression neural network do? एंड याद है ना आप लोगों को, क्विज टॉप क्विज के लोगों के हमने नाम रख रहे हैं। उन लोगों को भी लास्ट में है प्राइजेस। Oh, मुदस्सिर on the top. ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो क्या? सही बात। Which function helps in turning the output of a neural network into probabilities in classification? क्वेश्चन पढ़ा है तुम्हें? Okay, not much. क्वेश्चन में कोई तो सही बता।
थोड़ा ऊपर आए. This is still on the top. MashaAllah, all correct. Oh, Meena Bazaar. ऊपर आए. MashaAllah. What is back propagation? Oh, Meena Bazaar and Ikram ऊपर आए. MashaAllah. This is still on the top. What does this softmax function classification? Team leaderboard. MashaAllah, all of them are correct. Which library is commonly used for creating neural networks in Python? The आसान question है. Oh, Meena Bazaar on the top. Ikram Necklace Road. MashaAllah. What does dropout help preventing neural networks? Oh, Ikram on the top and Abdul Mughis ऊपर आते हुए comeback हो रहा Abdul Mughis का. Majority of them are correct, which is nice. Which one of these is NN layer?
Nice. Meena Mazar on the top. Nice, mashallah.